Hello, MERN Stack developers. This is our new project, Cafe Management System. In this project, we divide this into two parts, that is backend and front end. So this is our backend part and this is our front end. And backend, we created multiple folders, one for config, controller, middleware. We will understand in our project creation. And this is our front end. Now run this project, npm run dev and run on the browser. Click on it. Here this is. We already registered in it. That's why we saw this interface. So let's sign out, and here sign in with new account, sign up with new account. So let's take our new user as Martin Grow, and email of this guy martin@gmail.com. ये हमारी हो गई email. देन हम लेंगे पासवर्ड. पासवर्ड क्या लेंगे? martin1234. क्रिएट अकाउंट. तो अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है विद दिस मेल. ऐसा करेंगे हम इसको साइन आउट करके, अगर चाहें तो लॉगिन फिर से कर सकते हैं. यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं. जो हमारा अकाउंट था martin@gmail.com, और यहाँ पे लेंगे मार्टिन 1234. आई थिंक हमने पासवर्ड रॉन्ग लिखा है. 1234. अभी भी हम रॉन्ग लिख रहे हैं. martin1234. यस, लॉगिन हो चुके हैं हम. तो हमें सबसे पहले एक ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें अभी हमें क्या करना है. ये डैशबोर्ड है. ये हमारा है न्यू ऑर्डर, जिससे हम न्यू ऑर्डर कर सकते हैं. ये हमारे यहाँ पे ऑर्डर्स आ जाएंगे जो ऑलरेडी हमारे डन हो चुके हैं, जो पिछले वाले प्रोजेक्ट में. ये हमारे टोटल ऑर्डर्स हैं इस कैफे मैनेजमेंट सिस्टम के, और ये हमारा मेन्यू है. डन. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक न्यू ऑर्डर करेंगे. न्यू ऑर्डर फॉर टुडे. सेलेक्ट करनी है हमें टेबल, इनमें से कोई एक टेबल. तो ये हमारी टेबल है. इसमें हमने ऑर्डर किया 2 पास्ताज एंड 2 प्लेट पास्ताज एंड 2 सैंडविच एंड 3 कोल्ड कॉफ़ी. नाउ प्लेस ऑर्डर. So this is in pending. You can see right here pending. Now we mark as preparing. So this is on preparing stage. If this is ready, mark as a ready. Okay. You can see right here order today and active orders. This is our active order. If we complete that means हम इसको पे कर देंगे तो हमारा ही कंप्लीट हो जाएगा. तो पेड टुडे में आ जाएगा और मेन्यू आ जाएगा, हमारा जनरेट हो जाएगा. ये हमारे टोटल ऑर्डर्स हैं. तो ये हमारा टेबल नंबर 6 पे जो ऑर्डर है वो अभी रेडी है. समझे? और ये हमारा मेन्यू है. तो ऐसा करेंगे, इस ऑर्डर को करेंगे कंप्लीट. कैसे? ऑर्डर्स में जाएंगे, टेबल नंबर 6 वाले ऑर्डर को देखेंगे, इसको करेंगे कंप्लीट. मार्क एज सर्व्ड मीन्स हमने सर्व कर दिया है इसे. सर्व करने के बाद अब हमारा होगा पेमेंट. तो पेमेंट हमारा कौन सा वे यूज़ करना है, इनमें से एक सिलेक्ट कर लेना है. हम कैश कर लेते हैं सिलेक्ट, और मार्क पेड एंड क्लोज टिकट. अभी हमने पे करने का सिस्टम ऐड नहीं किया है, इसलिए हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेड हो जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा पेड VIA कैश ऑन देयर डेट एंड इट्स टाइम. So this is our paid. When you see in this orders, you can see this one. Then और यहाँ पे अगर हम एज अ एडमिन ऐड होते तो हमें एक ऑप्शन मिलता टेबल ऐड करने के लिए. जैसे हम यहाँ पे साइन आउट किए, हमारा एडमिन है. आप जाके एडमिन देख सकते हैं, जो हमारा पहला यूज़र होगा वही एडमिन होगा. क्लस्टर्स में जाएंगे और यहाँ पे हमारे सभी चीज़ों के लिए डेटाबेस क्रिएट है MongoDB डेटाबेस के अंदर मेन्यू आइटम्स में हमारी मेन्यू आइटम्स हैं. ऑर्डर्स हैं, ये हमारे ऑर्डर्स हैं टोटल. एंड ये है हमारा टेबल, और ये हमारे यूज़र. तो यूज़र में सबसे पहले आया है हमारा एडमिन, जिसका नाम है हमारा वरुण. वरुण. तो वरुण से लॉगिन करेंगे, varun@gmail.com. पासवर्ड ऑफ दिस गाय वरुण या वी धवन. yes, this is password and move back. So this is our today's orders. This is manager's view. So in this we can add tables. So this is our टेबल की हम कैपेसिटी कितनी लेंगे? 6. दिस इज हाईएस्ट कैपेसिटी फॉर दिस. और यहाँ पे हम टेबल नंबर क्रिएट करेंगे, तो टेबल नंबर 2. यहाँ पे टेबल नंबर 2 नहीं है, तो टेबल नंबर 2 क्रिएट करेंगे. ऐड टेबल मीन्स टेबल हमारी एग्जिस्ट करती है टेबल नंबर 2. टेबल नंबर 3 भी होगी, 4 भी होगी, 5 6 7 नंबर क्रिएट करेंगे. 7 भी है, 8 क्रिएट करेंगे. और ये हमारा टेबल नंबर है, ये हमारी कैपेसिटी है, सॉरी. टेबल नंबर 7 ऐड हो चुकी है. और टेबल नंबर 2 क्रिएट करेंगे. यहाँ पे टेबल, यहाँ पे हमारी सीट्स करेंगे. तो सीट्स ऐड करेंगे टेबल नंबर 2 के लिए. ये हमारी टेबल नंबर 2 भी ऐड हो गई. तो हमारी टोटल सीट्स हैं हमारे कैफे में. टोटल ऐसा करते हैं, सीट्स बढ़ा देते हैं, 8 कर देते हैं टोटल. इसकी कैपेसिटी है 4. तो ये हमारी टोटल सीट्स हो चुकी हैं.
मेन्यू आइटम्स ये रहे, ऐड कर सकते हैं मेन्यू अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह से मेन्यू ऐड करेंगे। हाँ, चाय ऐड करते हैं जिसका नाम होगा टी हॉट मिल्क टी, एंड प्राइस ऑफ दिस टी इज 50 रुपीज, and tea is our category and available. Yes, caption, this is very famous tea of our cafe with extra extra milk. ऐड टू मेन्यू, तो हमारे मेन्यू में एक और चीज़ ऐड हो चुकी है जो कि होगी हॉट हॉट मिल्क टी। डन। अगर आप चाहें तो और भी मेन्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। ऑर्डर्स में जाएंगे, ये हमारे टोटल ऑर्डर्स हैं। न्यू ऑर्डर्स पे जाएंगे तो हमारा एक और आइटम ऐड होकर आ जाएगा जिसका नाम है टी, कैटेगरी है टी हॉट मिल्क टी। So you can select your table. These are multiple tables. Understand? And this is our total dashboard. Done. View all orders. So this is our all orders. Done. Let's move to VS Code and let's create this project one by one. First we create backend and then after that we will create front end. Let's see. First change the directory. Open terminal for first change directory for cafe and then cd backend to run backend server npm run dev. So backend server is running and database is connected perfectly. Done. Now open one more terminal, new terminal cd at terminal change directory cafe and again change directory to front end npm run dev. Done. तो अभी हमारे ऐप में कुछ नहीं लिखा है हमने, ओनली ऐप लिखा है बस। ये ऐप आपको शो होगा और कुछ भी नहीं होगा एक्स्ट्रा में। डन है। तो इसको कर देंगे मिनिमाइज थोड़ा। ये हमारे बैकएंड साइड, यहाँ तो एरर नहीं आ रहा है। एक प्रॉब्लम थी जो कि हमने यहाँ पे रिजॉल्व कर ली थी कि हमने कोड सेट नहीं किया था, तो आप कर लेना। जैसे कि अगर आपने पिछला पार्ट देखा होगा तो आपको यहाँ पे कोड सेट करना है, जिसकी वजह से हमारा एक एरर आ रहा था। अब नहीं आएगा। ओके, मूव होते हैं फ्रंट एंड में। इसको करेंगे हम हाइड। ये हमारा फ्रंट एंड के हमने फोल्डर्स क्रिएट कर लिए थे सभी चीज़ों के लिए। ओके, नाउ वन बाय वन हम सभी प्रोग्राम्स को, सभी फाइल्स को क्रिएट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट विथ app.jsx, app.jsx, हियर इज इट। और हमें CSS का भी सेटअप करना चाहिए। CSS हमें कौन सी यूज़ करनी है? सिंपल वाली जो कि हम करते आ रहे हैं। बट हमारी CSS फाइल बहुत बड़ी होगी, तो इसलिए मैं CSS आपको शेयर कर दूंगा, आपको जस्ट इंटीग्रेट कर देना है। डन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे app.jsx से। ओके, इतना पार्ट हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमें क्रिएट करना है सबसे पहले फंक्शन का नाम होगा ऐप। वो इनसाइड दिस ऐप एंड डायरेक्टली वी विल यूज रिटर्न। एंड रिटर्न के अंदर सबसे पहले लेंगे क्या, एक डिव लेंगे। डिव जिसका क्लास होगा ऐप सेल, ऐप सेल, नॉट एफ सी, ऐप सेल, SC LL। देन ऐप सेल के अंदर जाएंगे, इस डिव के अंदर जाएंगे। सबसे पहले क्रिएट करेंगे नैव बार, नैव बार। तो ऐसा करते हैं हम नैव बार ही क्रिएट कर लेते हैं ना सबसे पहले। वन बाय वन हम सभी चीज़ें क्रिएट करते जाएंगे, लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डैशबोर्ड एंड ऑल। देन ऐसे ही करते हैं। राउट, राउटिंग भी करना है साथ में हमें। तो पहले यहाँ पे नैव बार इंपोर्ट करेंगे, नैव बार क्रिएट कर लेंगे। एक नैव बार हमारी कहाँ पे क्रिएट होगी? कंपोनेंट्स के अंदर। कंपोनेंट्स के अंदर नैव बार क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्रिएट दी नैव बार, नैव बार डॉट JSX। तो ये हमारी होगी नैव बार डॉट JSX फाइल के अंदर हम अपनी नैव बार्स लेंगे। डन। और यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं अपनी नैव बार। और उससे पहले हमें क्रिएट करना होगा ऑथ कॉन्टेक्स्ट और API। ठीक है, तो वन बाय वन सभी चीज़ें क्रिएट करेंगे। तो नैव बार हमने क्रिएट कर लिया है फाइल ओनली। और API में xios.js क्रिएट करेंगे, xios.js। ठीक है, xios.js का हम कोड लिखेंगे जिससे हमारा बैकएंड कनेक्ट हो जाएगा फ्रंट एंड से।
इंपोर्ट करेंगे XCOS फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, XCOS से, XCOS सेमीकोलन एंड const API equal to XCOS dot create, go inside this and create base URL colon import dot meta dot env dot white underscore API underscore URL जो कि हमारा URL होगा बैकएंड का, HTTPS नहीं कॉलन लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश API डन। यूज करेंगे अगेन सेमी कॉलन API डॉट इंटरसेप्टर डॉट रिक्वेस्ट ओनली रिक्वेस्ट डॉट यूज क्या करना है हमें, configuration go inside this and create token const token equal to inside local storage dot get item from cafe cafe token then semicolon if token then config dot headers dot authorization is equal to bearer token bearer at the rate, oh sorry, dollar token semicolon done and return कर देंगे return config then semicolon. This is our request for interceptor request, then use API dot interceptors dot use response arrow function response comma error arrow function go inside this and if error dot response question mark for ternary status equal to होना चाहिए हमारा 401 error localhost not localhost local storage dot remove item from local storage of cafe item cafe not cafe token semicolon then again local storage dot remove item from cafe user then if not window dot local location dot path name dot starts with slash login go inside this and window dot location not lo- local storage use location dot href is equal to slash login जो हमारा राउट होगा उसके अंदर आएगा डन देन नेक्स्ट रिटर्न करेंगे रिटर्न promise promise return a promise dot reject as error semicolon done. So this is our XIOS export करेंगे default API semicolon. This is our API for connect frontend backend with frontend. Intercept dot request dot user config const token equal to local storage get item from cafe token and config then interceptor dot response dot use. We will use response equal to response arrow function error is arrow function. Then if error dot response dot status is 401 then local storage remove item cafe token and remove item from cafe user too. If not window dot location path name dot starts with slash login window dot location dot href is equal to हो जाएगा हमारा slash login then return कर देंगे promise dot reject error done. The API is exported. Minimize this. After that create context for auth context. The context is auth context dot jsx. Hi, auth context dot jsx and write our context. So here const auth context equal to लेंगे create context that is null semicolon by default and export करेंगे const auth provider equal to children is the auth provider. So inside this and use const use state for user and loading. So user initialize user set user equal to
use state for null and const use location comma set location not location, we need loading loading comma set loading done equal to use state initialize with true done. Now use effect so inside this arrow function so inside this use effect const stored equal to local storage dot get item from cafe user semicolon const token equal to local storage dot get item from cafe token then if stored and stored and token then set user as json dot parse stored set loading false semicolon array empty array to store this use effect then const for login context async email comma password email comma अरे ये ऑटो अपडेट क्यों हो रहा है यार email comma password use arrow function को inside this डबल इक्वल यूज कर लिया हमने arrow में तो रिमूव करेंगे इसे const data equal to await api dot post for login slash auth slash login api comma email and password is our entities to login done then store in local storage dot set item as cafe token comma data dot token semicolon and local storage dot set item as cafe user comma json dot stringify data dot user semicolon and set user as data dot user semicolon and return data dot user semicolon and const register equal to async payload arrow function go inside this and use const data equal to await api dot post slash auth slash register comma payload semicolon local storage dot set item as cafe token comma data dot token semicolon and local storage dot set item as cafe user comma json dot stringify as data dot user and set user as data dot user semicolon then return data dot user semicolon done. After that again use semicolon for const log out arrow function and again equal arrow function this one for logout. So here we go for logout as local storage dot remove item as from cafe token and local storage again dot remove item from cafe user underscore user डन और सेट यूजर कर देंगे नल पहले हमने सेट यूजर क्या किया था डेटा डॉट यूजर जो हम डेटा ऐड करेंगे उसमें डेटा डॉट यूजर रिटर्न कर देंगे डेटा डॉट यूजर बट यहाँ पे हमें कर देना है नल क्योंकि हमें ये लॉग आउट करना है इसलिए नल यूज करेंगे तो हमारे डेटा में कुछ भी नहीं आएगा रिटर्न कर देगा auth context auth context dot provider auth context dot provider इसको हम ऐसा करेंगे एक टैग क्रिएट करेंगे प्रोवाइडर auth context dot provider वैल्यू क्या लेंगे इसका वैल्यू लेंगे यूजर कॉमा लोडिंग कॉमा लॉगिन कॉमा रजिस्टर कॉमा लॉग आउट
Then these are the values for this auth context, or the value is children as a children. Then semicolon, export करेंगे const use auth arrow function. So use context, use context as auth context, semicolon, as auth context, create context. तो import यहाँ पे हुआ है only use context. हमें import क्या क्या करना था, create context, use effect hook, and use state hook also. So these are our four hooks for that. Then import करेंगे API from, कहाँ से, API हमने कहाँ पे क्रिएट किए है, XIOS में, जो कि हमारे API नाम के फोल्डर में API/XIOS. Done. Then use semicolon. So this is our auth context. You can see this is our auth context. Now move to navbar. Where is navbar? navbar, इससे पहले हम मैन में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे अपना राउटिंग, क्योंकि ऑथ कॉन्टेक्स्ट हमने प्रोवाइड किया है. तो करेंगे हम यहाँ से रिमूव और इंपोर्ट करेंगे ऑथ कॉन्टेक्स्ट. ये होगा हमारा रिएक्ट डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे. इंपोर्ट, अरे यार टैग क्रिएट हो रही है. स्ट्रिक्ट मोड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे. इंपोर्ट करेंगे पहले नंबर तो रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट. इंपोर्ट करेंगे द नेक्स्ट रिएक्ट डोम फ्रॉम रिएक्ट डोम प्लस क्लाइंट. और इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट होगा हमारा ब्राउज़र राउटर. ब्राउज़र राउटर का यूज़ करेंगे फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम. app.jsx हमारा इंपोर्ट है और प्रोवाइडर इंपोर्ट करेंगे, तो हम कर देंगे यहाँ से रिमूव. हम लेंगे इंपोर्ट और प्रोवाइडर फ्रॉम डॉट कॉन्टेक्ट स्लैश और कॉन्टेक्ट डॉट jsx. Done. These are imported. Now move right here and use react dot strict mode. Go inside this and use browser router, and inside browser router create auth provider. Inside auth provider we will use app slash with protected route. Done. Navbar, create our nav. चेक करेंगे navbar is working or not. Fail to resolve import react dom करना था, डॉन कर दिया हमने. Okay, there is no issue right now, but nothing is visible. app.jsx app style को नहीं किया हमने एक्सपोर्ट, तो इसको करेंगे हम एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट करेंगे एज डिफॉल्ट एफ सेमीकोलन. देयर इज नथिंग विजिबल.
because of this is inside app style. Remove this app style and let me check. Okay, navbar is not imported right here. Import navbar, import navbar, navbar from slash component slash navbar. Done. Check for browser. Now navbar is visible for you. Done. Now move to navbar and write our navbar program. और navbar के पहले हम लॉगिन रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर लें अगर तो पहले हम ऐसा करेंगे navbar ही क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है. Remove this div and create const user comma logout for arrow function use auth context, use auth context and const navigation या navigate equal to use navigate. Done. And const handle log out arrow function, go inside this and remove this p, log out semicolon and navigate as slash login. Done. So this is the way to get that as login or logout. And use navigate and import one more thing, that is a link we will use in it. So link and auth context, use auth from auth context. So import that. Done. And inside this return statement we will use header class name as navbar, navbar. Go inside this header and now create link, that is 2 equal to class route and class name equal to navbar underscore underscore brand name, brand. And use span class name is navbar mark. Done. And mark is t, cup, cup. Yes, use this one, and this belongs to link. Done. After that use one more span as roast and amp semicolon leader, yeah, ledger. Is this visible? Yes. Then after this link create one more thing, that is user and go inside this and create nav with class name is navbar underscore links. Go inside this and create link, that is to लिंक करेंगे स्लैश राउट. राउट हम अभी नहीं लेंगे, कुछ भी राउट एम्प्टी रखेंगे इसको. और इसको भी हम ऐसा करेंगे, अभी एम्प्टी रखेंगे, कोई भी राउट प्रोवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा. डैशबोर्ड. और हमें कुछ और राउट क्रिएट करने, पाथ क्रिएट करने हैं फॉर डैशबोर्ड के बाद न्यू ऑर्डर के साथ में ऑर्डर्स एंड मेन्यू. तो इनके नेम हम चेंज करेंगे, न्यू ऑर्डर और ऑर्डर्स, और इसका राउट होगा हमारा मेन्यू. देन यूजर डॉट रोल इज इक्वल टू एडमिन एंड क्रिएट लिंक टैग टू अलाइन टू. टू के अंदर क्या लेंगे हम, इनसाइड डबल क्वाड्स
स्लैश राउट फॉर टेबल्स। तो अभी हम टेबल्स का राउट ऐड नहीं करेंगे, इसको भी एम्प्टी छोड़ देंगे नैव के अंदर। क्लोज दिस और लिंक के अंदर लेंगे टेबल्स। ठीक है, तो ये हम राउट बाद में कनेक्ट करेंगे, तो हम ये क्रिएट कर लेंगे। डन। नाउ क्रिएट वन मोर div as navbar user. Go inside this div and create user binary parenthesis empty div, and inside this div create span tag with class name not this navbar underscore who. Go inside this span and return user dot name, और साथ में हम रिटर्न करेंगे em dot user dot role. डन। और क्रिएट करेंगे बटन विथ क्लास नेम बटन बटन हाइफन घोस्ट ऑन क्लिक button to handle logout. Done. And write sign out as per the button. Done. User curly bracket and use करेंगे in this ternary to return as colon and one more div empty div closing tag for this empty div. इधर क्यों थ्रो कर रहा है, क्योंकि हमने parenthesis की जगह पे यूज कर लिया curly bracket। parenthesis यूज करेंगे यहाँ पे। ओके, go inside this div empty div and create a link with class name as button host 2 equal to login। तो राउट में इसको भी हम ऐड नहीं करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। वो लॉगिन लिंक के अंदर जाएंगे और इसके अंदर लेंगे साइन इन। डन। देन अगेन ओपन लिंक विथ क्लास नेम एज बटन हाइफन प्राइमरी बटन, देन टू इक्वल टू लेंगे स्लैश राउट। तो राउट करेंगे हम रजिस्टर के लिए, बट अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं राउट। जब हम रजिस्टर क्रिएट कर लेंगे फाइल, देन हम राउट क्रिएट करेंगे गेट स्टार्टेड फॉर रजिस्टर। देन एडर। नाउ लेट्स सी द आउटपुट। हियर रिफ्रेश दिस, साइन इन and get started. I think let's provide CSS for this. तो CSS हमारी होनी वाली है बहुत बड़ी। तो CSS के लिए क्या उपाय करें हम? CSS हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं इसमें। फिर मैं CSS का लिंक आपको शेयर कर दूंगा, या गिटहब का लिंक, जिससे आप CSS ऐड कर सकें इसमें। ठीक है, या तो मैं CSS पूरी की पूरी अपलोड कर दूंगा कहीं पे, जो आपको अवेल हो जाएगी। तो हाउ टू शेयर दैट? Wait guys, we will continue with CSS. Hidden। तो ये आज की हमारी CSS सेव। तो ये ऑलरेडी इन यूज है। Move to browser, and here you can see the CSS is added for navbar. Then you can see our navbar, but any route is not available. Sign in button is also not available. Why, I don't know. Done। और ऐसा करें, एक बार हम राउट चेक करके देख लें एक बार। स्लैश डैशबोर्ड एरर तो करता है कि नहीं। डैशबोर्ड, वैसे तो एरर तो नहीं हो रहा है। तो हम सारे राउट ऐड कर लें क्या, या भी ना करें? At navbar route, first this is only slash route,
डैशबोर्ड, ये होगा हमारा ऑर्डर स्लैश न्यू, ये होगा स्लैश ऑर्डर्स, और ये होगा स्लैश मेन्यू। के अंदर रिटर्न कराएंगे हम अपना टेबल स्लैश टेबल्स। टेबल्स का टी हमारा स्मॉल होगा। टेबल्स राउट and sign in and sign out route. Inside this two would sign in slash login and use inside this as register slash register. Then go back to VS Code, not VS Code on the browser. Is there anything visible? Okay, no problem with that. Forget about all of that things. Now move to pages. And inside this page, create login.jsx and register.jsx. Create login.jsx. Write your login page const login equal to arrow function to return const login equal to use auth use auth को import कर लेंगे and const navigate navigate equal to use navigate भी import हो जाएगा हमारा semicolon then const form comma set form equal to use state as email colon empty card for restore email and password restore password empty cards done. So this is for form. Then const use error to receive error comma set error equal to use state empty string for initialization phase. This is as empty. Then submitting comma set submitting meeting. Yes, is it correct? Yes. Equal to use state as false semicolon. Then use const handle submit equal to async e arrow function go inside this e dot prevent default prevent prevent default. ये क्लास क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि हमने डॉट लगाया इसलिए। सेट करेंगे एरर को एज एम्प्टी एट इनिशियलाइजेशन फेज टू हैंडल सबमिट सेट सबमिट या सेल्फ सबमिटिंग एज ट्रू ट्राई अवेट for login form dot email comma form dot password semicolon navigate as slash dashboard when we login done. The login if the login is done, we will navigate to the dashboard. Then catch error set error as error dot response response dot data dot message or could could not sign in and check your details. And finally return as said submitting as false semicolon and return as first create a div inside this return as auth phase. Why it is not created div? Create with class name as auth phase. Go inside this and create one more div with auth card. Again go inside and create a span with class name I draw. इसके अंदर लेंगे front of your house और h1 लेंगे welcome back when you log in. Paragraph with class name auth serve as sign in to run the floor
or manage the counter and return error and creative alert क्रिएट नहीं हो रहा है ऑलरेडी क्रिएट करेंगे div class name as alert 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 hyphen hyphen error close this div and create error slash div and create form on submit handle submit as class name equal to form close this form tag and go inside this form tag so first label inside this form remove this html4 only use this label single tab email then input box create करेंगे as type लेंगे email और this is required लेंगे value लेंगे form dot email the value of this input on change e equal to set form comma email colon e dot target dot value डन और साथ में ऐसा करेंगे प्लेस होल्डर भी लेंगे इसके तो हमें क्या लेना है और प्लेस होल्डर जो कि होगा हमारा एंटर योर क्या कहते हैं यू एट द रेट रोस्ट एंड लेजर कुछ भी लेजर रोस्ट एंड डॉट कैफे फॉर एग्जाम्पल देन क्लोज दिस लेबल ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट हमारा कहाँ का घूम रहा है यहाँ पे देन एक और लेवल क्रिएट करेंगे फॉर पासवर्ड ऐसा करेंगे इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे लेंगे पासवर्ड इनसाइड दिस लेवल एज पासवर्ड इनपुट का टाइप क्या होगा पासवर्ड और रिक्वायर्ड ले लेंगे रिक्वायर्ड ही होगा हमारा देन फॉर्म डॉट पासवर्ड ऑन चेस ई सेट फॉर्म ईमेल की जगह पे लेंगे पासवर्ड डॉट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू फ्रॉम प्लेस होल्डर में जस्ट हम ऐसा करेंगे सिंपल रख देंगे इसे इमोजी इसमें से हमारा डॉट 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 निकल आएगा डॉट यहाँ पे कोई डॉट का साइन है इसमें पासवर्ड इंक्रिप्शन के लिए हमें डॉट डॉट में कुछ तो दिखना चाहिए क्या ऐड कर सकते हैं हम वैसे हमारे डॉट का शॉर्टकट की भी तो होगा कुछ डॉट निकालने का पर देख लेंगे बुलेट आइकन शॉर्टकट की शॉर्टकट की क्या है हमारी इसकी बुलेट आइकन की अल्ट+7 Alt+7 से आ जाएगा या होल्ड करना है हमें विंडोज़ में ऑल्ट प्लस टाइप 0149 ऑल्ट 0149 यूज दैट ऑल्ट 0149 यस a dot is available right now and remove this और इसको कर लेंगे हम कॉपी कितने बार 5-6 बार कर लेंगे कॉपी कौन राइट करेगा यार इतना डन तो हमारा इनपुट बॉक्स कंप्लीट हो गया ये लेवल कंप्लीट है अब लेवल के बाद हम क्रिएट करेंगे एक बटन तो सबमिट बटन क्रिएट करना तो रिक्वायर्ड ही है बटन जिसके अंदर लेंगे क्लास नेम एज बटन btn बटन हाइफन हाइफन प्राइमरी बटन हाइफन हाइफन फुल एज डिसेबल्ड इक्वल टू लेंगे सबमिट या सबमिटिंग एंड इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट यूज सबमिटिंग कर्ली ब्रैकेट एज साइन साइनिंग इन कॉलन साइन इन हाँ पैराग्राफ विद क्लास नेम और स्विच न्यू
टू द टीम, ऐड करेंगे लिंक विथ टू इक्वल टू प्लस रजिस्टर और क्रिएट एन अकाउंट। डन। दिस इज अवर लॉगिन पेज। इसको करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज लॉगिन सेमीकोलन। लॉगिन हमने मैप कर रखा है यहाँ पे। हम जाएंगे ऐप डॉट JSX में, यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे अपना लॉगिन। लॉगिन को कैसे यूज़ करेंगे, जस्ट आपको ऐप डॉट JSX में पहले इंपोर्ट करना होगा लॉगिन। डायरेक्ट यहाँ पे सिंपली इसको हाइड कर देते हैं, पहले कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पे लेंगे अपना सिंपल लॉगिन। लॉगिन प्लस फिर हम प्रोटेक्टेड राउट वगैरह यूज़ करेंगे, अभी सिंपली को इंपोर्ट कर लेंगे। और लॉगिन हमारा कहाँ से आएगा, सॉरी ये यूनाइटेड फाइल कहाँ से आ रही है, लॉगिन इंपोर्ट ना हो रहा है, लॉगिन हो जाएगा इंपोर्ट। डन। अब चेक करेंगे हम अपना ब्राउज़र, रिफ्रेश दिस, इज लॉगिन अवेलेबल, नो, लॉगिन हमें शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्रोटेक्टेड राउट के अंदर है आई थिंक सो, इसीलिए। इंपोर्ट तो हो गया है हमारा, तो ये हमारे डैशबोर्ड के अंदर शो होगा, इसलिए अभी शो नहीं हो रहा है। डन। तो इसको करेंगे हम यहाँ से अभी रिमूव, ओनली नेव बार को ही शो करेंगे। स्लैश, अब क्रिएट करेंगे हम अपना रजिस्टर, रजिस्टर डॉट JSX। डन। रजिस्टर डॉट JSX and here const register arrow function, go inside this and use const register as equal to use auth सेमीकोलन, use auth को इंपोर्ट कर लेंगे। डन। then const navigate equal to use navigate, imported that, and const form comma set form, use state as name empty string email colon empty string comma password colon empty string, then const error comma set error equal to use state empty string and const submitting comma set submitting. What wrong with this, just use state as false. Done. Now use const handle submit, or handle submit, हैंडल सबमिट के लिए हम ऐसा करेंगे, लॉगिन से इसको कॉपी कर लेंगे, हैंडल सबमिट को पिछले कॉपी करेंगे हैंडल सबमिट, और रजिस्टर के हैंडल सबमिट में यहाँ पर ऐड कर देंगे, पेस्ट करेंगे हैंडल सबमिट इक्वल टू आसिंग की प्रिवेंटी फॉर सैम 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 ऑल थिंग्स आर सैम। जस्ट हमें थोड़ा सा यूज़ करना है, यहाँ पे लॉगिन की जगह करना है रजिस्टर, रजिस्टर फ्रॉम, यहाँ पे करेंगे फॉर्म ओनली क्योंकि मल्टीपल एंटिटीज होंगी। नेविगेट कर देंगे डैशबोर्ड को, कैच एरर, सेट एरर, एरर डॉट रिस्पॉन्स डेटा डॉट पुट नॉट क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट योर अकाउंट। देन और फाइनली में कर देंगे फॉल्स, रिटर्न सेमीकोलन, और इसके अंदर जाएंगे एक लेंगे रिटर्न, रिटर्न में जाएंगे ऑथ पेज फॉर्म ईमेल एवरीथिंग। तो ऐसा करेंगे हम, सेम वे यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे क्या, अपना लॉगिन, लॉगिन का रिटर्न के अंदर जाएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट को करेंगे कॉपी और रजिस्टर के रिटर्न की जगह पे ऐड कर देंगे। डन। बस हमें थोड़े से कुछ चेंजेस करना है, ऑथ पेज ही रहेगा, ऑथ कार्ड ही रहेगा, और ये भी आई ब्रो ही रहेगा, फ्रंट ऑफ हाउस वेलकम बैक की जगह यूज़ करेंगे हम ज्वाइन द टीम।
join the team. Done. और auto serve, auth serve रिमूव करेंगे इसे, इसकी जगह यूज करेंगे द फर्स्ट अकाउंट क्रिएटेड रन्स द शॉप एज एडमिन। तो द फर्स्ट अकाउंट क्रिएटेड रन्स द शॉप एज एडमिन, everyone after that is treated as, पैराग्राफ हमारा क्या हुआ, पैराग्राफ भैया को प्लेस that joins as staff, so except all will be staff, the first one will be admin. Done. Error type class name alert alert error error. Done. Handle submit error form लेवल। तो पहला लेवल हम करेंगे चेंज, तो करेंगे अपर साइड, और नेम चेंज करेंगे इसका, ईमेल की जगह लेंगे फुल नेम, और टाइप हो जाएगा हमारा टेक्स्ट, टेक्स्ट है ना। और रिक्वायर्ड ले लेंगे, वैल्यू लेंगे फॉर्म डॉट नेम, और ऑन चेंज की जगह पे यूज़ करेंगे सेट फॉर्म। लॉगिन में हमने क्या यूज़ किया था, ऑन चेंज, है ना। बट हमें तो ऑन चेंज की जगह सेट फॉर्म करना था ना, ऑन चेंज सेट फॉर्म, और ऑन चेंज सेट फॉर्म एज ईमेल, ईमेल की जगह पे लेंगे हम नेम, है ना, फर्स्ट एंटिटी के लिए तो नेम ही लेंगे, और सेकेंड एंटिटी हमारा होगा ईमेल, नेम टारगेट डॉट वैल्यू प्लेस होल्डर में लेंगे नेम, एक नेम लेंगे कोई किसी का भी रैंडमली, जैसे कि हम कॉमनली लेते हैं जॉन डो, जॉन डो, तो जॉन डो ही ले लेंगे, और ईमेल हमारा सेम ही रहेगा, रिक्वायर्ड फॉल्स सब सही। ओके डन, ऑल थिंग्स आर परफेक्ट। डन, बस हमें चेंज करना है थोड़ा बटन में, बटन को थोड़ा चेंज करेंगे। ओके, बटन, बटन प्राइमरी फुल डिसेबल्ड, सबमिटिंग, सबमिटिंग यहाँ पे लिखेंगे बस, क्रिएटिंग अकाउंट, और लिख देंगे क्रिएट अकाउंट। ये हो गया हमारा बटन। डन, so this is all over our register, export default as register semicolon। ओके, इसको भी हम ऐप डॉट जे एस में जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे, बट हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हम इसको इंपोर्ट करेंगे अपने डैशबोर्ड में, इसके अंदर हमारा लॉगिन रजिस्ट्रेशन सभी चीज़ें शो होंगी। क्रिएट द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड डॉट जे एस एक्स, डैशबोर्ड कैसे क्रिएट होगा, कॉन्स्ट डैशबोर्ड इक्वल टू एरो फंक्शन, इनसाइड दिस एंड यूज कॉन्स्ट यूजर equal to use auth semicolon and const stats comma set stats arrow function सॉरी इक्वल यूज स्टेट यूज करेंगे इसके लिए, क्योंकि होगा null initialize with set stat null and const active, एक्टिव लेंगे set active, को भी हम empty रख लेंगे set active equal to use state as empty array to check activity const loading
comma set loading equal to use state true semicolon. Okay, true. Use effect parenthesis arrow function go inside this and use const load equal to async. Use try and catch block const stats response order result order result equal to await promise dot all API dot get slash orders slash stats slash summary API dot get slash orders comma params colon status is pending comma then use then set करेंगे stats as stats response dot data semicolon set active orders dot orders response dot data dot orders dot slice as 0 comma 4 semicolon then use finally return set loading as false and load comma empty array and const cards equal to stats binary to use level colon active orders and comma value is stats dot active count done. इनको कर लेंगे हम कॉपी फॉर 4 टाइम तो रिटर्न ऑर्डर्स ऑफ टुडे एंड पेड टुडे एंड रिवेन्यू ऑफ टुडे तो इसकी जगह पे यूज करेंगे एक्टिव की जगह ऑर्डर्स टुडे ऑर्डर्स टुडे पेड टुडे और लेंगे रिवेन्यू टुडे यहाँ पे लेंगे स्टेट्स पेड टुडे काउंट टुडे ऑर्डर्स एक्टिव काउंट टुडे ऑर्डर्स पेड टुडे काउंट और वैल्यू क्या लेंगे बैकटिक डॉलर स्टेट्स डॉट रिवेन्यू टुडे डॉट टू फिक्स एज टू डन रुपये का साइन लेंगे हम्म, रुपये का सिंबल क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे दिखना चाहिए डन इस वन फॉर रिवेन्यू देन कॉलन में रिटर्न कर देंगे एम्प्टी अरे देन नाउ मूव टू मैन एज रिटर्न क्रिएट अ div पेज इनसाइड दिस पेज हेडर div एक और div क्रिएट करेंगे पेज हेडर create a div empty div with span class name as I row and the user dot role is equal to admin
to return the admin, otherwise the manager managers view colon today shift को डबल क्वाट से क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे for the admin. Done. After that, create a s1 tag, morning, user.name.split, order slash new, class name equal to button hyphen primary, new order. Done. Loading paragraph के अंदर लेंगे viewing your numbers. Done. और colon after terminary parenthesis to return empty div. Go inside this div and create a one more div, that is stat grid, class stat grid, and return cards.map as c arrow function parenthesis to return a stat card div, class name stat card key equal to c dot label. Close this div. Here is closing tag. Create span with class name stat card value, c dot value. Done. Then create one more span stat card label, the c dot value. C dot value की जगह लेंगे c dot label. Done. Now create one more stat dot top items dot length is greater than 0, and parenthesis create a div detail card. डिटेल कार्ड के अंदर लेंगे डिटेल कार्ड हाइफन चौक, s3 टैग लेंगे for today's best seller ol with class name best seller list, link with key t dot id, span t dot underscore id, span t dot quantity solved. Done. तो हमें एक स्टेट कार्ड भी क्रिएट करना था, दैन बेस्ट सेलर यूज करते हैं हम। तो इसको ऐसा करते हैं, अभी कॉपी कर लेते हैं और रिमूव कर देंगे। यहाँ पे लेंगे एक स्टेट्स डॉट टॉप आइटम डॉट मैप टी arrow function parenthesis go inside this and add that right here. Done. Now next section head section
add h2 spending ticket. Done. Then link to orders, view all orders, active dot length equal to 0, div empty state paragraph with no pending tickets. Right now hyphen hyphen the floor is caught up. Link as per to slash order slash new with class name equal to button hyphen hyphen primary, and inside this link add ring up an order. Then after this binary operator, use colon for this parenthesis, create received grid active dot map o arrow function and order card key equal to o dot underscore id orders equal to 0, means o लेंगे 0 नहीं parent backslash close this, hidden to map the active received grid. Now close this div, and here you can close this export default as dashboard. Done. अब जाएंगे हम app.jsx में, और हमें प्रोटेक्टेड राउट भी क्रिएट करना है। तो कंपोनेंट्स के अंदर क्रिएट करेंगे एक फाइल, जिसका नाम होगा प्रोटेक्टेड राउट डॉट JSX। मैंने कुछ नाम रॉन्ग कर दिया, हाँ रीनेम करेंगे, JSX करना है, प्रोटेक्टेड राउट, यस। कॉन्स्ट प्रोटेक्टेड राउट इक्वल टू लेंगे चिल्ड्रन कॉमा एडमिन ओनली equal to false, arrow function go inside this, and const user comma loading equal to use auth semicolon. If loading, then return a div with class name page loader and the warming of the espresso machine. Done. Then if not user, then return a navigate navigate to login as replace slash semicolon. If admin only, then add user dot role not equal to admin, and return navigate to the dashboard equal to slash dashboard। डैशबोर्ड के लिए कोई सजेशन नहीं आ रहा है, रिप्लेस स्लैश सेमीकोलन, रिटर्न चिल्ड्रन सेमीकोलन। डन। इसको कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एज प्रोटेक्टेड राउट। डन। डन। अब जाएंगे हम ऐप डॉट जेएसएक्स में, के अंदर लॉगिन भी हमने इंपोर्ट कर लिया है, रजिस्टर करेंगे, इंपोर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है।
नैव बार के अंदर क्रिएट करेंगे एक मैन टैग। मैन के अंदर लेंगे राउट, और राउट के अंदर पाथ सेट करेंगे सबसे पहले किसका, पाथ इक्वल टू स्लैश एलिमेंट इक्वल टू नेविगेट टू द डैशबोर्ड एंड रिप्लेस। डन। राउट का आप चाहें तो क्लोजिंग टैग यहीं लगा सकते हैं, अदर भी क्लोजिंग टैग लगा सकते हैं अलग से भी। ऐसा करेंगे हम, इसका क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे, अलग से लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट इसको कर देंगे हम क्लोज यहीं पे ही। लगा भी दी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चलेगा। बस यहाँ पे नेविगेट करेंगे स्लैश के बाद लॉगिन, ये जाएगा हमारा स्लैश लॉगिन के अंदर, लॉगिन एलिमेंट, और कोई नेविगेट नहीं करना है हमें। सिंपल यूज करेंगे लॉगिन स्लैश डन। इसी की तरह से यहाँ पे भी करेंगे यूज रजिस्टर, और स्लैश में राउट लगाएंगे रजिस्टर। देन मैप करेंगे हम अपना डैशबोर्ड इस तरह से, यूज करेंगे राउट। राउट का हम क्लोजिंग टैग नहीं लगाएंगे। पाथ लेंगे इक्वल टू स्लैश डैशबोर्ड एलिमेंट इक्वल टू, एलिमेंट क्या लेंगे हम, प्रोटेक्टेड राउट। और इसके अंदर लेंगे अपना डैशबोर्ड। डन। और ये राउट हमें क्रिएट करने थे राउट्स के अंदर यार, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। राउट, इन राउट्स के अंदर रखेंगे इन राउट को। डन। कुछ इस तरह से आपको मैनेज कर लेना है। डन। एक और राउट सेट करेंगे, जो कि होगा हमारा पाथ इक्वल टू एस्ट्रेस एलिमेंट इक्वल टू नेविगेट टू स्लैश डैशबोर्ड रिप्लेस। नेविगेट को करेंगे क्लोज। डन। लेट्स चेक द आउटकम। व्हाई नथिंग इज विजिबल। प्रोटेक्टेड राउट रजिस्टर। नेविगेट में हमने इंपोर्ट नहीं किया है राउट, राउट कॉमा राउट, ये राउटिंग हमारी वर्क ही नहीं कर रही है। अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। नैव बार कंपोनेंट लॉगिन
रजिस्टर, प्रोटेक्टेड राउट, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर वगैरह, मेन्यू ऑर्डर कुछ भी नहीं चाहिए, टेबल भी नहीं, मेन्यू नहीं। कि डैशबोर्ड में प्रॉब्लम है हमारे, डैशबोर्ड को चेक करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ भी अभी इंपोर्ट नहीं किया है ना, हो नहीं इंपोर्ट करेंगे। रिएक्ट कॉमा यूज स्टेट हुक, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इंपोर्ट करेंगे लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इंपोर्ट करना है एपीआई फ्रॉम एपीआई स्लैश एपीआई स्लैश एक्सयूएस, एक्सआईओएस कुछ भी पढ़ लो इसको। एंड इंपोर्ट करेंगे यूज ऑथ फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट स्लैश ऑथ कॉन्टेक्स्ट, इंपोर्ट करेंगे ऑर्डर कार्ड, ऑर्डर कार्ड तो अवेलेबल नहीं होगा, ये एरर थ्रो ना करे, कंपोनेंट स्लैश ऑर्डर कार्ड। तो इसके लिए ऐसा करेंगे, एक ऑर्डर कार्ड यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर क्रिएट कर लेंगे, ऑर्डर कार्ड डॉट जेएसएक्स, और आर ए एफ सी कर देंगे डन, इससे एरर थ्रो ना करे। डैशबोर्ड में वापस आएंगे, डन। भगवान कुछ तो शो कर देना यहाँ, कुछ तो शो कर दिया है। ओके, क्योंकि हमने थ्री डॉट्स लगा दिए हैं एपीआई के पहले, डबल डॉट्स आएंगे मैप करने के लिए, नथिंग इज विजिबल। थोड़ा हम चेंज करने वाले इसमें, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड एस स्लैश है, तो इसको करेंगे हम रजिस्टर, डन। चेक करते हैं इज रजिस्टर इज विजिबल और नॉट, नो, नथिंग इज विजिबल, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक रिएक्ट। टर्मिनल्स ओपन करके देखते हैं, हमारा या तो डेटाबेस डिस्कनेक्ट नहीं हो गया, कनेक्टेड है। चेक कर लेंगे एक बार फ्रंट एंड बैक एंड को भी। हाँ, क्योंकि डेटाबेस हमारा कनेक्टेड है ही नहीं। मोंगोडीबी को फिर से कनेक्ट करेंगे, डिलीट, इंटरनेट नहीं चल रहा यार। ओके, कंफर्म दिस अगेन, दिस इज इन फाइंडिंग, वेट। पता है ये लास्ट लास्ट टाइम में जब हमारा सब चीज़ें वर्क करने लगती हैं तो ये एरर थ्रो करने लगता है, वो भी डेटाबेस जैसी बेकार प्रॉब्लम के लिए। अभी मैं स्ट्रीम बंद करूंगा ना, तुरंत ये चल जाएगा। डेटाबेस इज कनेक्टेड, लेट्स चेक फ्रंट एंड, इसको करेंगे एक बार टर्मिनेट, TLS npm रन डेव, फ्रंट एंड को फिर से रन करेंगे, कुछ भी शो नहीं हो रहा है, बस ये क्या प्रॉब्लम है भैया।
Backend is working perfectly. I think something wrong in this front end program. This is also the mistake we have done. Import React from React. अरे पैरेंथेसिस क्यों यूज किया है यार? एरर रिमूव हो जाएगा। अभी भी हमें कुछ शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमने चिल्ड्रन ढंग से नहीं लिया है। Hmm. So this login order card dashboard. I think nothing is wrong in it. Why? This is not working perfectly.
auth provider, auth context provider as children, auth context dot provider value user loading login register logout as of now in children. यूज navigate यूज auth और इसमें हमें लिंक करना है यूज करना लिंक और रिक्वायर रिक्वायर क्यों किया हमने यार इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले रिएक्ट फ्रॉम यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट टाइप हमारा क्योंकि मॉड्यूल है लिंक यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम इंपोर्ट यूज auth फ्रॉम स्लैश कॉन्टेक्स्ट स्लैश auth context सेमीकोलन देन टेम्पो रजिस्टर रजिस्टर के लिए भी यही चीज़ हम पहले इंपोर्ट करेंगे ओके रिएक्ट के साथ में एक हुक भी इंस्टॉल करना है यूज स्टेट हुक यूज auth then context auth context that was the problem and in dashboard we imported all things are perfectly oh finally the login form is visible for register now we can register and let's check it is going to the database or not name zone do right now this is a name email zone123 @gmail.com and password zone1234 registration failed why let's see where is register this is our register here register use auth navigate run from platform use state name empty email password set error use state submitting use state false handle submit done async e dot prevent default set error set submitting try and catch log for register form slash dashboard response dot data dot message could not create your account and auth phase auth card and form is on submit handle submit class form full name टाइप यहाँ से रिमूव करके देखें नेम का
required form dot name e equals to set form e dot target value button btn primary button full disabled submitting creating account create account auth switch. Refresh this again as monu जहाँ monu @gmail.com monu m जहाँ 1234 create account रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है हमारा क्यों? और कॉन्टेक्स्ट में चेक करेंगे for register the payload will handle async payload const data equal to await api.post/host/register payload local storage dot set item as cafe token data.token local storage dot set item as cafe user json stringify data dot user set user as data dot user and return data dot user done. Children auth provider use context. This API is not working perfectly. Let's check. API slash access state import dot meta dot env dot void API URL is equal over 401 status and local storage dot remove item if window not window dot location dot path name starts with slash login window dot location href slash login return promise dot reject error API. Try to use this again. Ronnie Pandit Ronnie @gmail.com Ronnie R12345 registration failed. But that not the correct problem. When we move to the database, you can see right here, not in IP, we need to check our node plus yes cluster and browse. Wait, the internet is slow. Click right here and browse collections. In these collections, we will find our tables, and that not our tables, that document-based database in JSON format. Okay, move to the test, and we have all tables, but there are two tables of orders and orders. We need to remove one, but we will remove after some time later. And let's check users. In this users table, so the user is registered successfully on Ugayat and
email, but the rendering is the issue. This is not rendering to the dashboard. That's why it shows us registration failed. If you want to log in, you can easily log in. Scan the sorry, and right here use login, and here enter your new email that you already that you right now registered. This is the email monu123 at the rate gmail.com. M capital, go ahead 123 and sign in. So when we sign in, we found this interface means nothing is visible, just the screaming background. So let's check the problem. Why? Mm, let's terminate this and run this again. npm run dev and the interface after register. Sorry, login. So when we refresh, we found something at the background but not visible right here. Let's try to register or login. First, we will register mm, Tom or money, money day, and email money at the rate gmail.com, and password of this guy morning day 1234. यहाँ पे हमें एक मैसेज रेंडर हो रहा है रजिस्ट्रेशन फेल। इस मैसेज को पहले तो करेक्ट करते हैं। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो रहा है बट हमें फेल लिखा आ रहा है। रजिस्टर on submit, created account, button primary button full name, disable submitting, and submitting is available. Register, this is our API for that, and token cafe user, that user. Okay, protected route or navigate as the dashboard when we log in. Bar handle submit, submitting through registration form to dashboard. We should render at the dashboard when we register, but this is not working well right now. Why? I don't know. Import register React used state and from React, and import link and use navigate from React router DOM, and import use auth from auth context. Yes, this is working perfectly. And where's the problem? Const register equal to const register use auth navigate from the form set form or name. Yes, form is working perfectly, and set error submitting use state handle submit async key dot prevent default set error set submit true try set error set submitting. Yes, this is also working perfectly. Submitting true try await register form navigate slash dashboard catch error and set error dot response data dot message could not create your account, and finally set submitting error. What's wrong in it? I'm not able to find out the issue with that. Form label full name set form. Either it's working well, but what's the problem?
They will then input form dot name, email, then password. All entities are working perfectly for the database. And when you check your database cluster and browse collections, and here when you check this, you will found the user is submitted, but this is not rendering to the dashboard. Why? We don't know. Users, new user is added perfectly. कुछ तो हमने रॉन्ग किया ही है। यहाँ पे हमें रजिस्टर में हमने रेंडर करा के रखा है रजिस्टर ही। यहाँ पे लॉगिन में मूव होना चाहिए और यहाँ हमें लिखना चाहिए साइन इन डन ऑथ स्विच। और यहाँ पे आना चाहिए हमारा ऑलरेडी ऑन स्टाफ। डिफॉल्ट रजिस्टर सबमिटिंग create account disabled equal to submitting button full primary done। हैंडल सबमिट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सेट सबमिट फॉल्स। नेविगेट डैशबोर्ड फॉर्म सेट सबमिटिंग सेट एरर e dot prevent default passing key handle submit set submitting use state false auth context register const register async payload const data await api dot post slash post slash register payload local storage set item cafe token data dot token and local storage set item as cafe user json stringify and data dot user set user data dot user and return data dot user। Let's check the backend and here the auth. This is for protected route auth controller register रजिस्ट्रेशन फेल्ड क्यों रिटर्न करता है ये बट रजिस्टर हो रहा है। चेक करते हैं एक बार और कंट्रोलर को भी चेक कर लेते हैं। मैसेज फेल एरर एरर डॉट मैसेज try const mail request dot body if not name the status as 400 const existing equal to await user dot find one email dot to lowercase if existing data and response dot status as 409 json message an account with this email already exists const user count role user count equal to 0 admin and staff। So here is the problem, that is token generation. We haven't had the token with user ID on token which we created sign token। Oh, this is the problem। यहाँ पे हमें कोई टोकन टू सेफ मोड नहीं लेना था। यहाँ पे साइन टोकन लेना था विथ यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी एज पर यूजर आईडी साइन होता है टोकन में। जब हम डैशबोर्ड में चेक करेंगे तो यूजर आईडी में हमारा यूजर शो हो जाना चाहिए और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या रिटर्न करेगा 201 जैसन मैसेज आएगा हमारा टोकन कॉमा यूजर and user dot to safe object like this। Now this will return our safe object token register perfectly और यहाँ पे आईडी आपका शो हो जाएगा डैशबोर्ड में। Okay, now try to work with this again
and database is connected. Yes, well, I think we should terminate this and run this again. npm run dev, remove this, create an account. फिर से यहाँ पे भी क्रिएट एन अकाउंट फिर से क्यों आ रहा है? हमने तो साइन इन कर दिया था ना इसे। ये सेव क्यों नहीं हुआ? हाँ, हमने यहाँ पे इसको सेव नहीं किया है। इसको सेव करेंगे, चेक करेंगे। हाँ, साइन इन आ रहा है। जब हम लॉगिन में भी मूव हो रहे हैं, रजिस्टर में भी रजिस्टर करेंगे। न्यू पर्सन, जॉनी, राजा, जॉनी आर, जॉनी रहने देते हैं, जॉनी @gmail.com, एंड जॉनी का जे कैपिटल और राजा 123। क्रिएट करेंगे अकाउंट। हाँ, अब जाके हमें इसने डैशबोर्ड पर रेंडर करा दिया है, बट हमें डैशबोर्ड विजिबल नहीं है। डैशबोर्ड की पिछली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो तो चुकी थी भैया, डैशबोर्ड को फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या? डैशबोर्ड डैशबोर्ड, तो मुझे लगता है डैशबोर्ड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। एक डैशबोर्ड, यूजर, यूजर और स्टैट्स, स्टैट्स, यूजर स्टेट, यूज स्टेट, लोडिंग एक्टिव एंड स्टेटस स्टैट्स। रेंडर नहीं हो रहे हैं तो हमें चेक करनी चाहिए ऐप में। तो इस तरह से डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड से एलिमेंट। डैशबोर्ड पहले तो अभी तो वर्क कर रहा था, अब क्या प्रॉब्लम हो गई फिर से? सेल है पर पिछली क्लास में मैंने क्लियर कर दिया था इसको, फिर भी प्रॉब्लम करने लगा। फ्लैश एलिमेंट हैज डैशबोर्ड, तो सबसे पहले हमें डैशबोर्ड ही विजिबल होगा। लॉगिन, रजिस्टर, डैशबोर्ड एलिमेंट इक्वल टू लिया हमने, रजिस्टर, देन प्रोटेक्टेड राउट और डैशबोर्ड एंड राउट, अ सिंपल राउट फॉर दिस। वो फिर से रजिस्टर चेक करेंगे, डैशबोर्ड में ही मूव हो रहा है। डैशबोर्ड हमारा बस शो नहीं हो रहा है। बैकएंड, यस, इज वर्किंग। तो फिर से चेक कर लेते हैं, बैकएंड सर्वर रन तो हो रहा है ना? ओ, बैकएंड में ही दिक्कत आ गई, इसीलिए वो हमारा डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा है। डेटाबेस कनेक्ट नहीं है हमारा। तो डेटाबेस को फिर से चेक करेंगे, आईपी को डिलीट करेंगे, इस आईपी को न्यू आईपी करेक्ट करेंगे, कनेक्ट अ न्यू आईपी एड्रेस। दिस इज वैलिड फॉर 6 आवर्स। यस, द रिक्वेस्ट इज बाइंडिंग। ये एक्टिव हो जाएगा, देन हम मूव होंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए ये आ रहा है मोंगो डीबी एरर। तो ये मोंगो डीबी कनेक्टेड आ जाना चाहिए। ये एक्टिव हो जाए एक बार, फिर वहाँ हम इसको रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे कनेक्टेड हुआ कि नहीं। ये इंटरनेट प्रॉब्लम करता ही करता है, कंपलसरी हो गया है। एक्टिव हो गया है, तो करेंगे रिफ्रेश। मोंगो डीबी कनेक्ट हो जाओ भाई। यार इंटरनेट
प्रॉब्लम कर रहा ही है। इंटरनेट मान जाए यार, रेंडर नहीं कर पा रहा है वो डेटाबेस की वजह से। इसको टर्मिनेट करते हैं एक बार, npm run dev करेंगे फिर से, डेटाबेस इज नॉट कनेक्टेड, तो फिर से डिलीट करते हैं, कंफर्म। लगता है दूसरा वाईफाई भी कनेक्ट करना पड़ेगा साथ में, डेटाबेस के लिए। आप कंपास का यूज़ करना भी स्टार्ट करना होगा, होगा वही कनेक्ट होगा। कनेक्टेड, चेक दिस। आई थिंक MongoDB कनेक्ट नहीं होने वाला जब तक हम इसको स्ट्रीम को क्लोज नहीं करेंगे। Stream is working well, but there is a issue, that is database is not connected. So friends, we are going to end this live right now, and this. Okay, now connect the MongoDB again, active. Let's check the database connected or not. Yes, MongoDB connected. We know that this was the internet problem. Then we now move to Frontend, and dashboard is not visible. I think we should terminate this again. Terminate this, npm run dev dashboard. Why? Again, database problem. MongoDB is connected, but this is not visible. Why? Dashboard. Order route, menu, table, auth, order वाली ये order.js, order ही हो गया है, फिर क्या प्रॉब्लम है? Table, user, menu, auth, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। बैकएंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस राउट के लिए डैशबोर्ड ही रिटर्न नहीं कर रहा है। Navigate to the dashboard, register, dashboard,
एक बार लॉगिन पर रेंडर होके देखते हैं। लॉगिन हमारा हो चुका है, जो जॉनी राजा से हमने लॉगिन किया था वो हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। बस डैशबोर्ड हमारा परफेक्टली विजिबल नहीं है। लॉगिन विजिबल है, रजिस्टर तो हमारा विजिबल हो गई, यस रजिस्टर विजिबल है। न्यू ऑर्डर, डैशबोर्ड नहीं है विजिबल। ये रहा हमारा डैशबोर्ड, डैशबोर्ड से एक्सपोर्ट किया। डैशबोर्ड को एक्सपोर्ट किया, ये जाएगा हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स में। डैशबोर्ड कन्वर्ट किया हमने स्लैश डैशबोर्ड में, सिंपल। विथ प्रोटेक्टेड राउट, प्रोटेक्टेड राउट का है हमारा, प्रोटेक्टेड राउट। लोडिंग रिटर्न क्लास पेज लोडर वार्निंग ऑफ storing machine। Let's try to see the dashboard through login। लॉगिन करेंगे सबसे पहले एज अ एडमिन। तो एडमिन हमारा क्या था, अरुण धवन। तो डेटाबेस में चेक करेंगे एक बार। क्लस्टर्स, ब्राउज कलेक्शंस, एक टेबल को डिलीट कर देना चाहिए। एडमिन है वरुण @gmail.com। एज अ एडमिन लॉगिन करेंगे, वरुण @gmail.com। वी धवन, द पासवर्ड इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। वी धवन, वरुण का मेल रॉन्ग लिखा होगा अपना, वरुण @gmail.com। साइन इन क्यों नहीं हो रहा है, और साइन इन में भी कुछ प्रॉब्लम है क्या? और कंट्रोलर में जाएंगे, लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन के अंदर इसमें भी हमने टोकन क्रिएट किया तो है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। मैसेज क्या रिटर्न कर रहा है, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। बट ये करेक्ट है। एक बार हम ऐसा करेंगे, नया यूज़र लेंगे, हार्दिक @gmail, ओके हार्दिक पटेल, पटेल @gmail.com। पटेल 1234। लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड में मूव होंगे, बट रजिस्टर करेंगे, डैशबोर्ड में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। डैशबोर्ड यार, मत कर। इसी वजह से हाइड है। और मेरे चांस ज़्यादा लगते हैं इसी में है। डैशबोर्ड नॉट विजिबल, व्हाई? क्योंकि नॉट एबल टू फाइंड आउट। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का कनेक्शन होगा हमारा गेट स्टेट से, जो हमारी लास्ट एपीआई हुई होगी आई थिंक।
Get stats. This is our API to check the stats summary means dashboard stats. Let's check the problem in it. What is wrong with that? Why this is not working? For those stats. Get exports dot get stats equal to async request for response try catch log for on start of day equal to new date. Yes, start of day, get hour, set hours, const active count, today orders and paid orders equal to await promise dot all order dot find document dot in status created at paid paid at revenue today paid today. Error guy response dot json active count today orders revenue today match dot round revenue today paid today count top items start of day equal to new day async request comma response get stats start of day equal to new day. मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इसके अंदर. Oh, this is the problem. Order spelling mistake. तो स्टेटस हमारा नहीं शो हो रहा था ऑर्डर डॉट फाइंड. और तो नहीं है ना कुछ प्रॉब्लम. रिफ्रेश करेंगे. यस तो हमारा इतनी सी प्रॉब्लम की वजह से डैशबोर्ड शो नहीं हो रहा था. न्यू ऑर्डर तो अभी रेंडर हो गई नहीं. न्यू ऑर्डर पेज हमारा अवेलेबल है ही नहीं. ना इसको मैप किया है हमने. तो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड. एक ऑर्डर ऐड करके देखते हैं बैकएंड एपीआई से कि हम
कार्ड ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। न्यू ऑर्डर क्रिएट करेंगे सबसे पहले, या मेन्यू ऐड कर लेते हैं। तो इसका काम तो हमारा हो गया। एक ऑर्डर कार्ड क्रिएट कर लेते हैं और स्टेटस चिप क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, कंपोनेंट में। ऑर्डर कार्ड, रिमूव दिस स्टफ and import simple. First React. I think this will be React import by itself. So use const order card equal to order by arrow function. Go inside this const time equal to new date order dot created at dot to local date string comma hour and 2 digit comma minute and 2 digit. Done. Const item count equal to order dot items dot reduce sum comma I arrow function go sum plus index dot quantity comma 0 and return. Inside this return use link, create a tag link to equal to backtick orders slash the order with their id. So let's take order dot underscore id and class name is received. Done. Go inside this link and create a div name as received dog. Again go inside this and use span with class name as received number order dot order number and status chip. स्टेटस चिप के अंदर क्या लेंगे, स्टेटस इक्वल टू, स्टेट नहीं लेना है, स्पेस ले लेते हैं, स्टेटस इक्वल टू order dot status, the status of your order. And we can also close this tag right here if you do not want to use this closing tag. Yes, done. Then create one more div for received table, received table, table order dot table number received divider के अंदर लेंगे area hidden equal to true, ठीक है। Then ul लेंगे with class received lines underscore underscore lines. Go inside this and use order dot items dot slice as 0 comma 3 dot map as hit comma index arrow function. Go inside this with parenthesis not curly bracket, use parenthesis for use link li and use key inside this as key equal to index, and here use span with 8 dot quantity item dot quantity x item dot name, its dot name is item dot name, and use span again
for item dot price multiply by item dot quantity, close this parenthesis, dot to fixed as to, close this curly bracket. Done. And here order dot items dot length greater than 3 and link class name received more and use closing plus order dot items dot length minus 3, close this curly bracket right here. For more items use as, close this more item. Done. You will then create one more div as received divider and one more area hidden as true. Done. Then one more div class name received put span item count to return item count, and item count is not equal to 1, then it will return as otherwise empty string. Close this and यहाँ पे एक डॉट यूज करनी है बीच में टाइम स्पैन यूज करेंगे क्लास नेम रिसीव्ड टोटल order dot total dot to fixed to, close this. Order card is complete. I think this can make the problem because of we are not using this at the center of this. No problem. We will manage if any problem occurs. Now use status status chip dot jsx const in capital status class equal to, go inside this and use finding as chip hyphen hyphen finding comma preparing for chip hyphen hyphen preparing comma, when ready we will return chip hyphen hyphen ready comma served as chip paid. पेड क्यों, यहाँ पे तो सर्व्ड यूज करेंगे ना, पेड वाले में पेड यूज करेंगे, मैं तो सर्व्ड ही यूज करेंगे. Then paid chip hyphen hyphen paid cancelled as chip hyphen hyphen cancelled const status chip equal to status arrow function use parenthesis span class name chip status class status
export default status chip. स्टेटस चिप डन। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट react from react सेमीकोलन डन। स्टेटस चिप भी हो गया। अब जाके हमें क्रिएट करना है मेन्यू डॉट जे एस एक्स टू रिटर्न अवर मेन्यू। तो इन पेजेस क्रिएट मेन्यू dot jsx and here import react first with we are going to use effect and use state hook. Use effect and use state from react import API from xcos import use auth from context slash auth context semicolon const category equal to coffee comma tea comma cold view view comma pastries। जो जो हमने ऐड किया है ऐसा करेंगे यहाँ से, और एक कंट्रोलर में ऐड किए थे ना। Here is order, yes, मेन्यू आइटम। ये रहे हमारे मेन्यू आइटम जिनको हम कर लेंगे यहाँ से डायरेक्टली कॉपी, ये हमें फिर से राइट ना करना पड़े। पेस्ट कर देंगे, बस इनके हम फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देंगे। ऑलरेडी हैं यार इनके तो, ठीक है। देन एम्प्टी फॉर्म लेंगे, कॉन्स्ट एम्प्टी फॉर्म फॉर फर्स्ट फॉर नेम, नेम ऑफ द आइटम, देन डिस्क्रिप्शन इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, देन कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी लेंगे कैटेगरीज बाय इंडेक्स, तो कैटेगरीज विथ देयर इंडेक्स कॉमा प्राइस एम्प्टी स्ट्रिंग is available through an image URL as empty string semicolon, then const menu equal to parenthesis go inside this, and const user equal to use auth semicolon, const items comma set items equal to use state, then use const again, loading set loading equal to again use state as true, and const so form and set so form equal to use state as false, and again const edited editing id set editing id,
editing id equal to use state as null and const form comma set form equal to use state as empty form. Done. And const error is equal to set comma set error equal to use state as close with empty string semicolon. Then all use state hooks are created and in slices. Then use const for load equal to async. Go inside this and set loading as true and try const data as equal to await api dot get slash menu semicolon and set items as data dot items semicolon. Then use finally set loading as false. Use state, not use state, use effect hook for initialize load call the load with empty array. Then const group equal to y categories dot map as cat arrow function. Go inside this and category cat comma items as items dot filter with index I dot category equal to category comma. And next is use filter as z arrow function c dot items dot length is greater than 0 and const open new equal to parenthesis. Go inside this set form empty form semicolon and set editing id as null and set show form as true semicolon. Run this semicolon again. Then const open edit. Now open edit equal to use item as for edit set form. Yes, obvious. Then dot item comma price as string. So item dot price we will set through this. Not inside curly bracket we need to use a simple parenthesis for item dot price. Then use semicolon at the end and set editing id as item dot underscore id semicolon and set so form as true semicolon. Then const handle submit equal to async e arrow function. Go inside this e dot prevent default e dot default to return prevent default event and error. Done. Then try for this if const payload arrow equal to dot form comma price colon number as form dot price. Then return if in editing id go inside this await api dot put backtick slash menu slash editing id comma payload use as await api dot post
slash menu comma payload and set show form as false and load semicolon and use catch block for error catch error set error as error dot response dot data dot message or a message is could not save this item. Done. And again move to next one for handle delete const handle delete equal to async id arrow function go inside this and use if not window dot confirm as remove this item from the menu question mark for asking and return and await api dot delete backtick slash menu slash through our id menu item id and load semicolon done. Then const toggle available equal to async item as await for api dot put backtick slash menu slash the item dot id to get the item comma after backtick use comma for next is available colon not item dot is available and use load semicolon return parenthesis for div page one more page div page header and div will span class iPro and use the menu h1 what's on the board user dot role is equal to admin and button with class name as button hyphen primary on click open window open new what I'm doing to add new item add item after page header add show form show form for and operator parenthesis the form on submit use handle submit as class name form card style equal to margin bottom as 32 then s3 tag inside this form for editing id binary operator for edit item otherwise return new menu item done then error and div with last name alert create a div class name equal to alert alert hyphen error close this and use inside this error to return the error if this is not visible
create one more div for form row and use label and remove this HTML4 or inside this and use name, only name for input, your name input, or use required, not type. Yes, it is required, and value equal to form.name on change e set form comma name colon e dot target dot value. Done. After that, label remove this HTML4, price in rupees. So put add input box again, remove this type and add हमें टाइप ऐड करना चाहिए इसके अंदर. टाइप क्या लेंगे इसका, नंबर for the price and minimum length, minimum start from 0 and step equal to 0.0.1 and required and value equal to लेंगे form dot price on change e equal to set form as form comma price colon e dot target dot value. Done. And use form row label, remove this HTML4 and inside this label use category. Next, select, remove this all stuff inside this, use value for this as form dot category on change e equal to set form comma category colon e dot target dot value. Categories dot map as c, value as c, e equal to लेंगे c whatever. Done. Label. Now add one more label as same as this for this one for category. Now add for availability description. Now create for availability. Change this name as available and select as value that is form dot is available. Use ternary yes or no. No. Now change e equal to set form as form category e dot target dot value. E dot target dot value is equal to yes and use options
option with value yes or no. Use yes and add one more option as no, and here you can use no. 86. Then add one more level after that, level, and remove this HTML4 level description span with class name optional, and use optional and text area. Rows equal to 2 and value equal to form dot description. On change e set form as form comma description e dot target dot value. Then after closing this level, create a form in form inline energy div class form inline button with class btn btn primary with type as submit. Then go inside this button and use editing id binary operator for save changes colon add to menu button and use button with class name btn hyphen hyphen ghost type equal to button on click parenthesis arrow function stat show form as false, and inside this button use cancel. Done. After this form add loading binary parenthesis or add paragraph p tag paragraph as loading the code. Group dot length empty state. The menu is empty. Add the first item to get started. Group dot map g div key equal to g dot category and class name as menu section. Inside this div use as to tag with class name menu section underscore title as g dot category. Then menu grid menu grid as g dot items dot map
as item, create a div e equal to item dot underscore id, class name as menu card, item dot is available, and menu card hyphen hyphen unavailable. Done. Close this. Why this parenthesis not set this up this div again, create a div, class name as menu card head, and h4 as item dot name, span with class name menu card price, item dot price dot to fixed, item dot description, and p class name menu card description, item dot description, close this, item dot is available, and span with class name as menu card underscore flag, or currently and 86 id. Done. Then use one more thing for user underscore role is equal to होना चाहिए admin to get this data as div menu card. One more thing, we need to add actions in this div class, button with class name link button with on click toggle available, item dot is available as mark unavailable colon mark available, button with class name link button, use on click open edit item edit button dot class name link button as link hyphen button hyphen danger as on click
handle delete item dot underscore id to delete done. Save this. Now let's check. Add this into app.jsx as route. Create route for this in app.jsx. That is route path equal to path क्या होगा हमारा menu element equal to add element as protected route close this go inside this and as menu is our protected route menu slash close this done. What's wrong with this route? ओके हमने अपने राउट को क्लोज नहीं किया क्लोजिंग टैग नहीं लिए इसलिए मेन्यू राउट की कोई बात नहीं तो क्लोज कर देंगे परफेक्टली अलाइन करके कुछ इस तरह से डन और उसको करना है हमें इंपोर्ट मेन्यू को मेन्यू हमारा अवेलेबल है पेजेस के अंदर और साथ में दो चीज़ें और जो कि होगी हमारी ऑर्डर डन इंपोर्ट करेंगे मेन्यू को इंपोर्ट मेन्यू फ्रॉम वहाँ से पेजेस स्लैश मेन्यू डन मेन्यू हो जाएगा इंपोर्ट व्हाट्स रॉन्ग विद दिस मेन्यू ओके ऑटोमेटिकली ये हमारा इंपोर्ट हो चुका है हाँ यहाँ पर इसको हमें रिमूव कर देना है वापस मेन्यू इज ऑलरेडी अवेलेबल रिफ्रेश दिस व्हाट्स रॉन्ग विद दिस here is terminals front end terminate this npm run dev nothing is visible dashboard dashboard is also not visible just because menu call slash menu for admin element protected route import किया हमने मेन्यू को from pages slash menu फिर क्या प्रॉब्लम है
ऑर्डर कार्ड में प्रॉब्लम है हमारे। एंड चीज़ यहाँ पे हमने इम्पोर्ट नहीं किया है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और इम्पोर्ट नहीं किया है स्टेटस चिप को फ्रॉम स्लैश स्टेटस चिप। Dashboard is not visible। हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया है ऑर्डर कार्ड को। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑर्डर कार्ड। अब एक्सपोर्ट हो रहा है कि नहीं? यस, नाउ दिस इज वर्किंग। Menu items, click on menu, force on the board, the menu is empty, add the first item to get started। मेन्यू में हमने कुछ भी ऐड नहीं कर रखा है। मेन्यू आइटम्स, एक मेन्यू आइटम तो ऐड है। And here we need to add this new order। Is menu working? Menu is not available right now, so there is no issue with that। Let's add a new file in this phase, that is create a new file, name as new order.jsx, and this is our file for new order। First we need to import some React hooks, that is the first one is use effect and use state and use memo from React। Then and import navigation ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। देन इंपोर्ट करेंगे API from the route where we add this। Done। Then const create new order function for this and go inside this। Let's take some use state, so initialize some use states of tables, menu items and table ID, card nodes and errors, and submitting and loading। So one by one, first we need to navigate the first thing, use navigate, use navigate semicolon। Done। Then const create use states of everything, that is first create for tables comma set tables equal to use state as empty array to store tables data। Then const menu items to store set menu items equal to use state, or we will store this inside the array for menu items। Then table id const table id comma set table id equal to use state, एंड टेबल आईडी को तो हम एक स्ट्रिंग के अंदर ही स्टोर कर लेंगे। देन कॉन्स्ट कार्ट लेंगे, कार्ट कॉमा सेट कार्ट इक्वल टू यूज स्टेट एज inside the curly bracket for add cart, so it will add menu item id and quantity through quantity। Then const cart के बाद लेंगे हम nodes कॉमा set nodes equal to use state inside this curly brackets, inside this double quotes as a string, so nodes हमारे as a string store हो जाएंगे। Then const error set error इक्वल टू यूज स्टेट, एरर्स को भी हम डबल क्वाड्स के अंदर ही रख देंगे स्ट्रिंग। देन कॉन्स्ट नेक्स्ट वन इज सबमिटिंग सेट सबमिटिंग इक्वल टू यूज स्टेट as false, so initialize with false and we will update that।
when we submit that. Const loading equal to set loading equal to use state, सेट लोडिंग को हम कर देंगे ट्रू, मीन्स कि हमारी ट्रू लोडिंग स्टार्ट है। यूज इफेक्ट हुक लेंगे टू लोड सिंक कॉन्स्ट load equal to async arrow function go inside this and use try and catch block for load the data const table tables response comma menu response equal to await from promise dot all to all api dot get tables tables comma api dot get menu menu comma params colon available available colon true comma then close this and set table id not table id set only tables as tables response dot data dot tables semicolon set menu items as menu response only menu response dot data dot items to store items in the menu. Done. And we will use finally for this as set loading as false. Finally क्या होगा हमारा false हो जाएगा set loading. Done. Then use करेंगे load all the load function load and comma with the array. Done. Then const create grouped grouped equal to use memo and arrow function to go inside this const cats const cats equal to the array of new set for menu items dot map with the help of m object m dot category the category return return cats dot map as c arrow function and return the category colon c comma items as menu items dot filter by m object m m dot category is equal to लेंगे c. Done. And next all the menu items the array then const update quantity equal to id comma delta arrow function go inside this and here set cart as previous arrow function go inside this and here const next equal to previous and const quantity equal to next id or 0 plus delta if quantity is less than equal to 0 then delete next id else next id is equal to quantity and return next and const cart lines equal to object dot entries as cart dot map as id comma quantity for cart lines return const item equal to menu items dot find with the help of m object arrow function m dot underscore id of that menu item is equal to by their id and return the items id quantity and item then for cart lines.
And next, const const subtotal of the cart items. So cart lines dot reduce through the sum of l comma l arrow function for sum plus l dot item dictionary dot price or 0. The price or that will be written as 0. Then quantity will be multiply and otherwise it will be 0. Then for tax, so let's add tax equal to subtotal multiply by tax कितना ऐड करना है 0.05. Yes. And const total after tax, तो सब टोटल प्लस हो जाएगा टैक्स. डन. देन const handle submit function async e arrow function inside this, and here e dot prevent default as return the current statement. Error for submit error, it will store set error if the table id set error. Choose a table first before handle submit before order the mail. So return to the table. Choose the table first, and if cart lines dot length is equal to 0, then it will return a set error to add at least one item to the order. Done. And after that return and set submitting as true. Then try const data equal to await api dot post slash orders comma table id comma items colon cart cart lines dot map as l arrow function the l for lines menu items menu item id colon l dot id comma quantity one sorry l dot quantity. Done. Comma notes navigate backtick as slash order slash dollar for data dot order dot underscore id, then catch error set error as error dot response dot data dot message or could not place this order, and use finally as curly bracket to set submitting as false. Then and semicolon after that if loading, then return to the div class name as page and back to the loading the counter. Done. And close this statement. Now return to the HTML page means JSX page for return data. Here create a div with the name of page and create one more div page header to return page and page header. After that again simple div for create a span. Inside this span create class name as I bro the same one that we already create in everything. New order for new order and h1 as ring it up. Done. And next the error.
and create div, create a div. The div is created with the class name as alert alert hyphen hyphen error to return error at the top of the page after ring it up. Then and create a div as name as order builder. Go inside this div and create order builder underscore underscore menu and with label dot table select and remove this HTML4 because we do not want this right now, and we just need this class inside this label to return table, not table tag, only table as a text. Then select tag with name हमें नहीं लेना है, आईडी लेना है select के अंदर, तो इन सबको हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू क्या लेंगे हम इनसाइड दिस कर्ली ब्रैकेट और टेबल आईडी एंड ऑन चेंज e set table id e dot target dot value to return the target value as the table selection. To select table, then option value is empty and select a table and we will return the tables dot map with the help of t object. We will return the all the tables option. Create option dot option key equal to t dot underscore id as value equal to t dot underscore id. Done. Then table t dot number and table capacity. So return inside this parenthesis t dot capacity and seats minus t dot status. Group dot map or return g arrow function, and here we go inside this and create a div menu section, and let's take key g dot category. Why this capacity? We need category as menu section. Go inside this div and here we take h2 tag with class name menu section underscore underscore title g dot category, then pick list and g dot items dot map as items and create one more div with the class name as pick row, and the key for this key to select item dot by id for id. Then to return item, and here create div with a strong tag item dot name as strong, then create a span with class name pick hyphen row price to return the price item item dot price dot to fixed. What happened? Fixed with to close this. Done. After that, we'll return the quantity control. Create a div quantity control
to check the quantity by button with the button only and with type as button on click function is go inside this and update quantity by item dot id minus 1. If item is selected, the quantity will be updated as minus 1. Then disabled equal to not cart and return item dot underscore id to minus the quantity. Done. So it will minus the quantity from database. After span and return cart item dot underscore id array or as 0, close this curly bracket here, and the next button for increment, sorry, button on click, and here update quantity as 1 and इसको कर देंगे हम, इसको रिटर्न मूव कर देंगे, क्वांटिटी हमारी अपडेट हो जाएगी +1. देन आफ्टर दैट वी विल यूज राइट योर प्लस close this div and create aside for this aside tag with class name order builder underscore underscore cart. Go inside this aside tag and here take s3 tag and as tag as ticket, and here cart lines dot length is equal to 0 or use ternary to return cart with paragraph dot mutate no items yet tab plus next to a menu item to return ticket of the order. ul dot class name as received lines, and here create cart lines dot map as l arrow function, and here take li key l dot id to return the id, then create a span with l dot quantity x l dot item dot name, span l l dot item dot price multiply by l dot quantity, close this dot to fixed as 2 and close this. Then ul after this div, after inside this aside, we'll take the next one is received builder class, received not builder as divider, received divider as area hidden equal to true. Close this div right here, and we haven't need this div. Create one more div with cart class cart totals div, again div, and inside this div create a span as sub total, and then again create one more span for sub total return total dot true fixed as 2. Done. After that create one more div with span tags as 5% span for tags dot true fixed as 2.
Done. Div.cart totals brand. Create span total. Then after that total, create one more span for total dot to fixed by 2 and close this. Done. To return the rupees symbol, we can return amount after tax and the total, subtotal, and the total. Done. Then after that, create label and remove this HTML4 we haven't need. Create nodes for the kitchen and create a span with the class name as optional and create optional and then text area and remove all these things id and name from here, and we just need rows, number of rows 2, and value as nodes, and on change e equal to set nodes e dot target element dot value. Then the text area for this label. After that, create a button with the class name btn, and here we will take one more button hyphen hyphen primary color for this button, and button hyphen hyphen full. The size of this button is full, and on click as handle submit, and disabled as submitting. Disabled equal to आएगा submitting. Then and go inside this button, and here we will take as submitting binary to sending to kitchen, or maybe after that we can return place order. We have two options this binary. So here this is all our new order page, and इसको करेंगे export default as new order. Done. And if there is an issue we will resolve that. I think everything is fine. Now let's take this inside app.jsx. Inside this we will create as protected route. Create a protected route, but we haven't created table and orders. Route path, path क्या है हमारा? पाथ है हमारा न्यू ऑर्डर, नहीं, ये होगा हमारा पाथ इसका ऑर्डर स्लैश न्यू एलिमेंट इक्वल टू, एलिमेंट के अंदर लेंगे हम प्रोटेक्टेड राउट एज अ टैग, क्लोजिंग टैग भी लगा देंगे protected route, and here we will add new order. Close this. Done. The closing tag for route. Then I think new order can show error. New order हमारा import हो चुका है. Yes. Import new order from the page slash new order. Done. New. The new order page is not visible for us.
check the dashboard, and here new order slash new. This is the route order slash new, and inside this order slash new. Yes, what's wrong with this? I think we should complete all the files. After that, we will check what is the issue and create the next file for orders.jsx. So import. No, we will import after. This will be automatically import. Just create const status is for orders. Create status is error. Status is equal to empty. Then pending. Then the next one is preparing. And next ready. The order properties served and paid and cancelled. Then const orders equal to. So inside this and here arrow function for orders. Initialize the array. Initialize use state for orders, comma set orders equal to use state empty array for this, and const create status set status meaning is wrong, I think. Yes, status use state as empty string, then const loading comma set loading equal to use state as true, then const load equal to async set loading to try const params equal to curly bracket semicolon if status param dot status equal to status semicolon const data as equal to await API dot get slash orders comma param semicolon, then set orders as data dot orders semicolon, and use finally set loading as false. Done. This is our load. Then move to the next and create use effect for aslen disabled next line. So React hooks exhaustive and diff exhaustive. Use effect arrow function. Call the load function ESLint disable next line React hook slash exhaustive depth status update the status and return as create a div page, and then page header the same thing that we already create for many of the files. Again the div and the span for span class I bro for all tickets means all orders or nothing. H1 orders done. And filter var create a div filter var select the value select
and remove this all from select name and id, and we will take value for select as status on change, return e object for set status as e.target.value. So it will return the e.target.value for status. To select status from status is dot map as go inside this and create option key equal to as value is also as go inside this option, and here we will take our as or all statuses. What's wrong with this as? Nothing. I think there is something wrong. Statuses dot map function parenthesis option. The select closing tag is done. What's wrong with this? What's wrong with this? Status is dot map by as वैल्यू इक्वल टू नहीं लिया ना यार, क्या है? ऐसी सिली सिली मिस्टेक कर देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है. लोडिंग ट्राइनरी टू लोड p paragraph for loading tickets as colon again parenthesis, and here before this let's take orders dot length is equal to 0 and return as div class name as empty state. No orders match this view. Received grade. Create a div as name as received grade and go inside this and create orders dot map as o object for orders for order card. Create order card this one as key equal to o dot score id order equal to o. Close this order card to return order, and after that we can close this. Export default as orders. Then orders is also done. So let's add into. Let's check the import components. React hooks is imported from React, and import API from where the API slash XUS. Then everything is fine in it. Export
orders, move to app, and here create route for this order. तो ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, for the path as orders, orders, और यहाँ पे रिटर्न क्या करना है हमें, orders, this one, so that is imported. Imported, yes. Now create table file, tables.jsx, and here const create function for tables, go inside this, and const create use state for tables, set tables equal to use state as empty array, then const loading comma set loading equal to use state as true, then const form set form equal to use state as number colon empty quotes comma capacity is 2, const error set error equal to use state empty string to store error, then const load equal to async create load, set loading as true by default, then create try and catch block for const data equal to await api.get to the tables if there is any, so set tables as data dot tables, and finally return set loading as false. Then use effect arrow function, go inside this, and here load semicolon, then create an with the array, and const handle add equal to passing e arrow function, go inside this e dot prevent default semicolon, and set error as string, then try and catch block, and here await api dot post slash tables comma number colon number as form dot number comma capacity number form dot capacity, set form as number comma capacity as 2, and load semicolon, and catch error set error error dot response dot data dot message could not add table, const cycle status equal to async table, inside this const orders equal to available comma occupied comma reserved, done. So these are the type of orders, then const for table,
So table will be available and occupied or reserved. Done. And order dot index of table dot status as plus percent order dot length. So this order dot length. Now create API for that as table route await API dot put to add the update the table slash table underscore id comma status as next, then load. तो स्टेटस हमारा अपडेट हो जाएगा, तब भी हम यहाँ पे अपडेट करेंगे एपीआई के थ्रू टू दी टेबल आईडी। तो अपडेट हमारा नेक्स्ट हो जाएगा स्टेटस if available that will be occupied, and maybe we can reserve that also, and after that it will be again available. Const handle delete equal to async by id will set this if not window dot confirm to remove this table as return semicolon await API dot delete backtick slash table slash by id and load semicolon and return first the common thing phase। ऐसा करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे कहीं सा, जैसे कि हम ऑर्डर्स में से ही कॉपी कर लेते हैं इतना पार्ट, क्योंकि हमारे टेबल्स के लिए। और एक डिव हमारी क्लोज नहीं है तो उसको भी क्लोज कर देंगे। डन। और यहाँ पे ऑर्डर्स की जगह पे लेंगे टेबल्स, और देन इसकी जगह पे लेना है हमें ऑल टिकट की जगह है फ्लोर प्लान। डन। आफ्टर पेज हेडर क्रिएट फॉर्म फॉर दिस फॉर्म एक्शन अभी नहीं लेंगे कुछ, यहाँ पे लेंगे ऑन सबमिट, क्या लेंगे हैंडल ऐड, एंड क्लास नेम क्या लेंगे फॉर्म फॉर प्रोवाइड स्टाइल फॉर्म कार्ड एंड फॉर्म inline style margin bottom as 32, and go inside this form as error and create a div class name as alert hyphen hyphen error. Done. And create input tag for type number placeholder as table as, and required, then minimum equal to 1, value is equal to form dot number on change e set form comma number e dot target dot value style equal to max width is 120, then link input type link number
placeholder seed minimum value 1, then value is equal to form dot capacity on change e equal to set form comma capacity e dot target dot value and style as max width as 120. Done. So this is for seeds, and next is button with class name btn, and here button primary add table, create loading paragraph for loading floor plan tables dot length is equal to 0. A parenthesis to inside this and create a div as empty state to inside this and create paragraph for no tables at to return there is no tables. Your above first one above. Done. Then colon again parenthesis or create one more div table grid and create tables dot map t, and here go inside this and create a div with class name div div with key लेंगे t dot underscore id class name vector floor table and floor table dollar t dot status to lowercase to return status in lowercase and create a span with class name floor table number t dot number and the table capacity floor table capacity, and here we will take as capacity of the seats and create button inside this with class name as chip and chip hyphen click cable or on click function for this take cycle status as t. So inside this and create t dot status, create one more button with class name button link button and danger on click handle delete t dot underscore id remove export default as tables. So this is for tables. Let's create a table and we need to import something that is API, import API
from slash API slash XIOS, and this is from React, and copy this route in this app.jsx, create tables, copy this route and place it right here, and the slash route path is for tables, and here we will take tables, import the tables is imported. Move to the browser, but new order is not available. All orders is working, pending, अभी एक भी ऑर्डर अवेलेबल नहीं है इन दिस डेटा। ऐसा करेंगे हम, न्यू ऑर्डर तो हमारा पेज शो हो ही नहीं रहा है अभी। मेन्यू पे भी अभी कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो करेंगे, साइन आउट करेंगे, लॉगिन करेंगे एज अ एडमिन। एडमिन का आईडी क्या था, डेटाबेस में चेक करेंगे क्लस्टर में, क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ तो ऐड किया था, ऑर्डर्स वगैरह सभी चीज़ें। इज इट क्लस्टर, ब्राउजर, कलेक्शन, टेस्ट एंड यूजर्स, देयर विल बी our admin Varun. Email, copy this email, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। नया अकाउंट रजिस्टर करते हैं, Parul Patel, then email parul123@gmail.com and parul Patel P8EL123, create account। the first account is created, the name of Parul। ऐसा करेंगे, साइन आउट करेंगे, लॉगिन करेंगे पारुल से, parul@gmail.com, p patel123 एंड साइन इन। हमारे साइन इन में ही दिक्कत है, साइन इन टू द run the floor or manage the counter। Let's check the login। आई थिंक लॉगिन पेज में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ही। हम्म और उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है कि नहीं लॉगिन को, लॉगिन फ्रॉम प्लीज, यस, लॉगिन एरो फंक्शन, login equal to use auth from navigate, use navigate form, set form, email, password, set error, submitting uses data as false, done, async, monu patel, monu patel, monu @gmail.com and monu1234, create account already exist आ रहा है, monu123, ये email राजीव, राजीव पटेल, क्रिएट हो गया अकाउंट। देन अगेन साइन आउट करेंगे और राजीव को कराएंगे email.com
अजीब। यस, साइन इन हो गया है। साइन इन साइन आउट परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अपने एडमिन को साइन इन कराएंगे। साइन अप गूगल। साइन इन कैसे करेंगे? ईमेल क्या है हमारा? और द एडमिन ईमेल varun@gmail.com। पासवर्ड ही मेरा रॉन्ग मैं लिख रहा हूँ। 1 2 3 V7। यस, दिस इज द पासवर्ड। न्यू ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। ऑर्डर्स। ओके, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस। एक और फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पेजेस के अंदर जो कि होगी हमारी लास्ट फाइल फॉर ऑर्डर डिटेल। क्रिएट अ फाइल इनसाइड दिस एज ऑर्डर डिटेल्स detail.js again with the help of MERN Stack. In this frontend, create order detail file for the dashboard. New order is not visible, and go back for the dashboard of this guy. So table number 1 and 3 is occupied. Okay, fine. We can add table. Done. So 3 tables is created. Let's add one more table with the members. Done. So one more table is created, and you can also create a table with the 6 guests. The capacity of one table is 6, so there is 6 tables created, and the orders is not visible. A new order is also not visible. So let's provide a new file for this, that is order details, to return the orders. Then const for create next status function, create a function next status arrow function arrow to return next status equal to pending। pending में रिटर्न करेंगे preparing comma, then again preparing to ready, then ready is as written as served। Done। then semicolon after that। const create पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड कौन कौन से हम यूज़ करेंगे? कैश, कार्ड एंड यूपीआई। तो उसके लिए लेंगे क्रिएट वेरिएबल फॉर पेमेंट मेथड्स इक्वल टू कौन कौन से हमारे पेमेंट मेथड होने वाले हैं? कैश, कैश एंड कार्ड, कार्ड, और होगा हमारा यूपीआई। डन। यूपीआई हो गया। देन क्रिएट अ फंक्शन फॉर दिस। द मेन फंक्शन इज ऑर्डर डिटेल। create arrow function for this, go inside this function, and here we will create through the id use param to return elements means values। const navigate equal to use navigate, import the navigate semicolon, then const the next one is order use state to set order equal to use state as null semicolon, then create again const for loading comma set loading equal to set loading equal to क्या लेंगे हम? use state as true semicolon, then again next const error set error लेंगे set error
equal to use state, use state as empty string to store set error, then const. The next one is busy, busy comma set busy equal to use state busy equal लेंगे use state for the false. Initialize with false, then const. The next one is payment, comma set payment equal to use state as cash return cash for payment, and const by default so add items, comma set so add items items. This is the correct meaning for items. Then use state for this as false, initialize with false, then const so add item हमारा हो गया है. Then next one लेंगे menu items set menu items, use state return use state for menu items. हम use state कौन सा लेंगे, items की मीनिंग हमने दोनों जगह पे रॉन्ग लिखी है. Menu items like this, remove this m and take right here. use state क्या लेंगे इसके लिए, हम menu items के लिए empty array semicolon and const. The next one is add cart, comma set add cart equal to use state as curly bracket, and next const load equal to async. So inside this set loading as true, return करेंगे set loading as true, then try and cancel block लगाएंगे to return data for set loading equal to await get API को get कर लेंगे dot get from the path. path क्या लेंगे इसका, path होगा हमारा orders slash through the id के थ्रू ही हम get करेंगे ना डेटा. तो यहाँ पे लेंगे id, then next close this और set order लेंगे as data dot order semicolon, then catch करेंगे catch error, catch the error and set error as error dot response response curly bracket dot data dot message, or return as could not lead sorry load could not load order done semicolon, and after that use finally inside this finally and set loading, return set loading as false semicolon, done, return set loading as false, then close this load and create use effect. Go inside this, create use effect, and here go inside this use effect to return load semicolon, then ESLint. This is for ESLint disable next line react hook react hooks slash exhaust 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 टिप भी यूज कर सकते हैं, exhaust टिप slash tab, comma id semicolon. After that const advanced advanced status equal to async. Go inside this and here we will take const next equal to next status to return the status order dot status semicolon, if not next return semicolon, and set busy as true semicolon, and use try and cancel block const data equal to await API dot fetch backslash slash order slash by id slash
status backtick comma status colon next, and set order as data dot order. Finally, set busy false semicolon done. After that, next const create cancel order equal to async. So inside this, and here we will take if not not window dot confirm as cancel this order, and then after that we can return semicolon set busy as true, and use try and catch block where const data equal to await API dot patch करेंगे backtick slash order slash their id slash status comma status colon cancel semicolon set order data dot order semicolon, and use finally go inside this and set busy as false semicolon done. So that next to the const check out equal to async, go inside this and set busy as true semicolon, and create try and catch const data equal to await, दिस इज फॉर पेमेंट। तो ऐसा करेंगे, इसको हम कर लेंगे कॉपी और इसकी जगह पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा हमें अपडेट करना होगा क्योंकि ये हमारी पोस्ट एपीआई होने वाली है, पोस्ट एंड ऑर्डर स्लैश बाय आईडी, और ये होगा हमारा चेकआउट के लिए, चेकआउट चेकआउट। यस, दिस इज करेक्ट मीनिंग फॉर चेकआउट। और यहाँ पे स्टेटस की जगह पे लेंगे हम पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड डन, और इसके अंदर लेंगे पेमेंट पेमेंट डन। आफ्टर दैट set order as data dot order semicolon, then catch error. If there is any error, the set error as we will return error dot response ternary operator for return data. Then next, the message will be render as the message is check. The message will be checkout failed done, and use semicolon. After that, use finally go inside this set busy as false semicolon done, and const open create a one more method for open add items equal to async function. Go inside this function open add item if menu items dot length is equal to 0, then we will return const as the data equal to await and API dot get slash by menu will get the param colon available is हो जाएगा true to return the menu items done, and after that semicolon, then set menu items and data dot items done, and set कर देंगे हम set show add items as true। Then next, submit add item, create a function for submit add item। अभी हमने क्या किया था, ओपन किया था add item को, अब हम करेंगे submit items equal to async, go inside this and const items equal to object dot entries as add to cart, और इसमें हम लगाएंगे filter
dot filter, not filter, filter. Go inside this by the quantity filter with the help of quantity, and go inside this, and quantity is less than equal to 0, less than 0 not equal to, and dot map for map by menu item id and quantity, menu item id and quantity. Done. Or use arrow function for return menu item by id and quantity, menu item by id and quantity. Done. And close this. If item items dot length is equal to 0, then return simply and set busy as true, and use try and catch block for this. And here we will take the data as create API for this. यहाँ पे इसको करेंगे रिमूव, ये क्या आ गया हमारा, यहाँ पे हमें try and catch block लगाना था. Try const data equal to await API dot post backtick slash order slash id slash items comma items, and set order as data dot order, written by data dot order. Set add card with the curly bracket to store set card, add set add card, then set so add items as false, then use finally set busy as false. Done. Semicolon. After that, if this is as loading, then return the div fees and loading the ticket, like this. And if there is any error, then return the div as fees, again the div class name as alert error, alert for error. And here we will take the error. Then if not order, then return null. If not order, then return null, like this. Then const can modify equal to not paid comma cancelled dot includes as order dot status semicolon, and return as phase, and inside this phase use phase hyphen narrow. Inside this, and link, create a link for two the side of slash path orders, and class name in this link, that is class name equal to back link to back to the order, back to orders. और यहाँ पे एक एरो भी लगा लेंगे जिससे कि हमें back, like this. Then create one more div detail head, go inside this div and create one more div again, create a span with class eyebrow, and here inside this create order dot order number. Then h1 to return table order dot table number. Done. Status chip, status chip status return order dot status slash order chip. Then after that, the next div for detail card. So inside this card and create s3 tag for items, then ul
for list of items. ul.class received underscore lines, and here one more class as received underscore lines hyphen hyphen wide. Then go inside this div ul, and here order dot items dot map it from I li key equal to I span it dot quantity x it dot name it dot item dot nodes ternary vectic for dollar item dot nodes vectic colon empty string close, and close the curly bracket of this span. After that, create one more span for its dot price multiply by its dot quantity item dot quantity dot to fixed to close this curly bracket of this span. Done. After this UL, create one more div received divide the area hidden is equal to लेंगे true. Done. Then so that create one more div cart totals like this. Go inside this div and create div again span sub total, create one more span order dot sub total dot to fixed as to div span for text, create one more span as order dot text dot to fixed, create a div cart totals brand span total span again for order dot total dot to fixed as to, and return amount. For amount it will return as rupees, so we will use rupees icon or maybe text. Then next to return order dot notes and the paragraph p the class name mutate style as margin top 12 and note as order dot notes. Done. And can modify use can modify and the div style equal to curly bracket margin top as 16, close this, and here we will take the closing of this div closing tag. Done. Go inside this div and here not so add items ternary parenthesis or button with class name as button hyphen hyphen ghost on click open add items plus add items colon parenthesis go inside this and create a div add items panel, go inside this and return menu items dot map as m, go inside this parenthesis
create a div class name pick row। कुछ तो रॉन्ग किया हमने, div क्रिएट नहीं हो रही हमारी। div क्लोजिंग भी लगा देंगे इसके लिए। div key as m dot underscore id and class name as pick row। Done। create div and strong m dot name span dot pick row price m dot price dot to fixed as to close this and create a new div quantity control. Go inside this and create button as type as button and create on click as parenthesis set add cart p arrow function. Go inside this p comma m dot underscore id colon math dot max 0 comma p dot m dot underscore id 0 minus 1 minus and span for this button add cart m dot underscore id and button type of this button is button on click function for set add cart as p dot m dot p comma m dot id. The same thing is happen colon p p m dot underscore id or 0 plus 1 and go inside this button and take plus. After this div, create a new div as name as hyphen hyphen inline style as margin top 12, create button class name btn button primary on click submit add item add items disabled is equal to busy. Done this button for add to ticket. Done the next button is for create one more button as class name as host color host on click and set this on click remove this one set so add item as false and remove this disable. Done and in place of this add to ticket use cancel. Where is the issue? If there is any error,
Hmm. Okay, after that, move to the next. One problem in this file. The problem is not visible, but what is that? That this is the problem. Why this? यहाँ पे हमने कॉमा यूज किया मैक्स के बाद हमने डॉट यूज कर लिया पी के बाद इसलिए सॉरी फॉर दिस देन after that after this div use can modify and inside this create a div with class name detail card के अंदर और भी क्लास लेंगे हम डिटेल कार्ड चौक s3 move this ticket along and create one more div that is div from inline inside this div use next status next status as order dot status from the array and go inside this and create a button with class name btn and here we'll take one more button primary for on click and here advanced status and disabled as busy equal to busy. Go inside this and use mark as next status order dot status button dot btn the class button hyphen hyphen ghost on click cancel order disabled is equal to busy and cancel order then can modify again for and parenthesis for detail card s3 for check out form inline select value payment on change e set payment e dot target dot value payment methods dot map sp option p equal to p value equal to p button btn button primary as on click to check out disabled equal to busy mark paid and close ticket done then order dot status is equal to paid and go inside this and create a div as alert of the paid alert for successful success paid via order dot payment method
and on new date order dot paid at and to local string. Done. Then detail card. Create a div detail card. Go inside this and create s3 tag for timeline. Timeline. Again. Go inside this and take ul as class timeline. Again. Create order dot history dot map as h comma I. Go inside this link li key equal to I. Close this and create a span inside this with the class name as timeline dot तो कर देंगे हम इसको हमने क्लोजिंग टैग वहीं पे लगा दी तो इसको हम रिमूव कर देंगे डन देन div strong s dot status as strong and time date and time return new date s dot changed at was this to local storage to local string is one all this function done dot h dot change by dot h dot changed by change at नहीं change by होगा हमारा y so this time done close this by semicolon this one और इसको कर देंगे export default as order detail like this और इसमें हमें और भी चीज़ें कुछ इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट करेंगे this that is status chip import status chip from component slash status chip और हमने क्या यूज़ परम किया यूज़ नेविगेट यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट करेंगे जो होगा यूज़ परम्स कॉमा यूज़ नेविगेट और एक और चीज़ होगी हमारी लिंक लिंक यूज स्टेट हो गया हमने यूज इफेक्ट यूज़ कर लिया एंड इंपोर्ट बाय रिएक्ट API status chip yes everything is fine I think yes done so this is our order detail file now move to app.jsx here create route for order detail after this new order create one more route slash order orders by their id colon id for order detail to return the order detail protected route done path element navigate to dashboard replace an order id to get the element of order detail new order done or orders element protected route orders tables orders हो गया tables हो गया then menu मेन्यू के ऊपर आएगा हमारा डैशबोर्ड slash dashboard the route for dashboard register login the default route app cell mapper react is never used by never react router dom login
register, dashboard, menu, tables, orders, new order, order detail. Everything is added. Protected route, yes. Done. Let's move to the browser. Here, these are our tables. New order. Why new order is not visible? Let's check why new order is not visible. The dashboard. This is perfectly mapped. New order file use memo is not working. New order grouped by use मेन्यू लिख दिया ना मेमो मेमो hook. This is our new order page. Select the table, this table, and old copy 100 rupees. What happened? New order. Let's take the order. Item select नहीं किया हमने. Add item करते हैं मेन्यू में. Item name pasta price 200 category sandwich breakfast available, yes. And description. This is this is very delicious dish of our cafe. Add to the मेन्यू आइटम ऐड हो चुका है हमारा. और एक और आइटम मेन्यू शो हो रहा है, टेबल शो हो रही हैं, ऑर्डर्स ऑर्डर्स हमारे एक भी नहीं है यहाँ पे. न्यू ऑर्डर. आइटम ऐड नहीं हो रहा है हमारा ऑर्डर्स के अंदर. न्यू ऑर्डर में कुछ तो प्रॉब्लम है. न्यू ऑर्डर टू द ऑर्डर बिल्डर मेन्यू टेबल सेलेक्ट. टेबल टेबल यहाँ से सिलेक्ट हो गई है हमारी. देन grouped dot map with the help of g dot category class name menu section and h2 for class name menu section title g dot category and pick list and g dot item dot map with the item dot id class name pick row div item dot name class name pick row price item dot price to fix to span quantity control type button होगा हमारा on click function update quantity. यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी नहीं लगाया हमने तो -1. यहाँ पे भी हमने अंडरस्कोर आईडी नहीं लगाया. देन disabled is not equal to cart for item dot underscore id माइनस हो जाएगा हमारा क्वांटिटी. बटन item dot id और जीरो स्पैन बटन done. और दिस इज फॉर कार्ट. लेट्स चेक फॉर दिस. न्यू ऑर्डर में माइनस हमारा हिडन है क्योंकि एक भी आइटम सेलेक्ट ही नहीं था. क्या यार क्या करता हूँ मैं भी. नोट टू द किचन. अमेजिंग फूड. प्लेस ऑर्डर. चूज द टेबल फॉर द दिस टेबल नंबर 3. ऑर्डर table. This is our total bill. Item for egg pasta or cold coffee. And if you want to add more item, you can add. Mark as preparing. So the payment method, the valid payment method is required. UPI done. Orders, menu, tables, new order, dashboard.
वन ऑर्डर, ऑर्डर टुडे, पेड नहीं हुआ है अभी हमारा एक भी ऑर्डर। डन। एक्टिव ऑर्डर हमारे वन। एक और ऑर्डर लेके देखते हैं। सिलेक्ट द टेबल फॉर टेबल नंबर वन एंड देयर इज फोर सीट्स। और एक और हम मेन्यू आइटम ऐड करेंगे। ऐड आइटम एज नेम, पास्ता हो गया, सैंडविच। सैंडविच, इज दिस करेक्ट मीनिंग ऑफ सैंडविच? सैंडविच। और प्राइस कितना लेंगे इसका? 300। एंड कैटेगरी लेंगे हम डेजर्ट में नहीं, ब्रेकफास्ट में ही। ओके, सैंडविच हमारा अवेलेबल है। सैंडविचेस, सैंडविच की मीनिंग हमने रॉन्ग लिखी है। और अवर सैंडविच, अवर सैंडविच इज फेमस फॉर, फेमस फॉर गुड फिलिंग। ऐड टू द मेन्यू, मेन्यू में हमारा एक और आइटम ऐड हो चुका है। देन ये हमारी टेबल्स हैं, टेबल ऐड करनी है, टेबल ऐड कर सकते हैं। मेन्यू आइटम ऐड करेंगे हम। टेबल नंबर किसके लिए? टेबल नंबर वन के लिए। आइटम ऐड करेंगे हम सैंडविच और एक कोल्ड कॉफ़ी। तो बिल हमारा काउंट हो जाएगा विद इंक्लूडेड द टैक्स। और कर देंगे नोट, क्या लेंगे? गुड, प्लेस ऑर्डर। ये टेबल नंबर वन के लिए हमारा ऑर्डर आ जाएगा। मार्क एज प्रिपेयरिंग, रेडी एज, मार्क एज सर्व। सर्व हो चुका है हमारा ऑर्डर ये वाला। इसका स्टेटस जब भी हम चेक करेंगे, चेकआउट डायरेक्ट नहीं हो रहा है। मार्क पेड एंड क्लोज द टिकट। पेड क्यों नहीं हो रहा है हमारा? क्योंकि ऐड न्यू ऑर्डर विद दीज आइटम्स। ऐड प्लेस ऑर्डर, टेबल हमें सेलेक्ट करनी है, टेबल नंबर फोर के लिए। प्लेस अ न्यू ऑर्डर। और स्टेटस हमारे क्या है? पेंड, प्रिपेयरिंग। देन इसको अपडेट करेंगे, मार्क एज रेडी। मार्क एज रेडी करेंगे, देन सर्व्ड कर देंगे। सर्व्ड, so this is served perfectly. Move this ticket along. Now we need to check out through card, cash, anything. So let's mark this. There is a issue. A valid payment method is required. Does this? So there was a issue with this payment. This payment, because we do not need to take this payment as a string. Just write a payment. Payment method is as payment. Payment method is payment. Done. Let's move to browser. Refresh this. And now try to mark paid and close the ticket. So this is status is paid. You can check the dashboard here. The revenue is updated as this: active orders 0 and 4 orders today and paid total 4, means all is paid. Done. View all orders. These are all orders, so these all are paid. Done. Pending, there is pending nothing. Served, everything is paid. Done. You can check your menu. There is some, you can add multiple items if you want. This is menu. And tables, these are tables. You can add some more tables if you want. Done. You can add it everything. So this is all over our cafe management system by using MERN Stack